सेटा सिंगल कलर बांध इनफैक्ट बांधरे जदि गोटे कलर आप बढ़े देले कि बहुत डिफिकल्ट हो जाए जोटा विद्यावालन पड़े सेटा सिंगल कलर बांध आउ से जो गार पड़ता से सरु गार पड़ता अर्थात से जो बांधा पड़ो से छोट गंटी पड़ो जी भितर पशो सी जापर कौटा बेसी कष्ट कौटा कम कष्ट बट सेटा गोटा स्पेशल दैट इज क्वाइट स्पेशल बट इट्स ऑल रिलेटिव राइट से बांधटा बंचब किंतु वर्तमान आपण जदि जीवे जो तैयारी होउची आउ सेठी आपण कहि परिबेन जे मिडिल मैन रहिबा कथा नहीं कारण कौनसी निर्दिष्ट वीवर कौनसी काम करेन इट इज ऑलवेज ए ग्रुप एफर्ट जीए सेटा बुणीची सीए सेटा बांधिनी इनफैक्ट आज सकाळे दिल्ली क्राफ्ट काउंसिल गोटे फंक्शन रे मते चीफ गेस्ट करी वेबिनार रे डाकिथिले वी गेव ए प्राइज टू ए क्राफ्ट्समैन ऑफ ओडिशा who is a tie dye craftsman सी वीवर नुहे के टाई डाई करे कारण दिल्ली क्राफ्ट काउंसिल मते कहले जे एथर आमे नेशनल अवार्ड एभली गोटे लोक को देबा जे पछरे लुचि रही काम करे किंतु बहुत काम करे जाको केबे केही रिकॉग्नाइज करी ना आपण देखिबे जे हस्ततंत्र रे इट्स ए टीम वर्क इट्स नॉट ए सिंगल वर्क जते बेले टीम वर्क हुए सेते बेले जण को कोऑर्डिनेटर हवा को पड़िबो अब से कोऑर्डिनेटर कालक्रमे मिडिल मैन हे जीवो यदि आपण किछ करि पारिबे let's see how that middleman can be developed to become a very efficient professional middleman right but जदि एटा को हमें बंचे रखिबा एबे आपण जानतु गां को एबे भी अति हाई क्वालिटी बांध काम रे वीवर हो कि टाई डाई क्राफ्टमैन हो ताको दिन को 300 टंका रु बेसी मिलु ताको 300 टंका रु बेसी एत पई मिलुनी कि से जेते साड़ी भलो कले भी से साड़ीटा 5-6 हजार रु बेसी रे जाउनी मु गोटे उदाहरण देली सो ताको आपण जदि ब्रेकअप कर देबे जदि 4000 गला यार्न रो खर्च 500 गला डाय रो खर्च 1500 रहला 5 दिन हैला दि जण गले त आपण भाग कला को ता भाग रे 300 ही पड़ तेनु तार उत्तर हैला से 5000 बदल रे ताको जदि 10000 मिलंता अब सीटा जदि ठीक भाव रे भाग हुंता ताहले होय तो ताको दिन को 500 टा 600 टा मिलंता ताहले सी से काम रे रहबे इट्स वेरी हाई स्किल्ड वर्क एवरीबॉडी कैन नॉट टाई एंड अनटाई this skill is dying the number of people who can do it properly they are diminishing and that is because the wage is too low and that is because the price is low and that is because we are still trying to cater to a middle market now this is not meant for the middle market it has to sell at 20,000 rupees and it has to go to a high market and then only it can come down and the person who is weaving can get 1,000 rupees a day and then he will say I will not go to any other job I will not go to an engineering college I will continue to do this now if that is to be done then I will again differ with the joint secretary we need sabyasachis we need people who can give such design that the sari can sell for 1 lakh rupees yes he will keep 50,000 but if 50,000 goes to the weaver he will think of doing another masterpiece like now unless we upgrade it and once you upgrade it you cannot compromise with quality amaro gote dharana achi je hastashilpo hastantanta एगुडा का हाथ रे करिबा तेनु भलो हबनी गोटे भूल हे जीवो कोठी डिफेक्ट बाहरी जीवो दीटा आइटम एका हबनी दैट इज रॉन्ग you cannot sell a thing at 30,000 40,000 and say ke agya eta to tike habo senti chaliba you have to be perfect and it is possible to be perfect we may do less but we will do it perfectly and for that we need a new class of entrepreneurs who are professionals who can impose quality and aggregate quantity and do the marketing we need new talents बड़ बड़ शिल्प अनुष्ठान खाली तांकर किछि सीएसआर पैसा फोपाड़ दे गोटाए तनेरा की कौन बनी दिले सेथरे चलिबनी पीपल हु हैव फायर इन देयर बेली जो माने कर एथरे इंटरेस्ट अछि जो माने एथरु लाभ करबा को चाहंती और से लाभ को शेयर करबा को चाहंती we need new startups with new talented professional people designers computer experts IT experts to get into this and do it and then we can
make sure that H type handloom will survive forever. Let L type survive as long as the government supports it. That's all, my dear. मु आपन को मोर जहा व्यू थिला बहुत संक्षेप रे कहबा के चेष्टा कली आ ओडिया रे कहको जदि ठीक भाबे कहि न पारली क्षमा करिवे. Thank you very much, and once again my greetings and congratulations to the weavers on the National Handloom Day. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद संतोष बाबू. आपण जो खूब बलिष्ठ भाव में आपण जुक्ति रखिले जे जदि भविष्य रे हमको हस्तशिल्प को हस्ततंत्र को बंचाई रखा हम ताहले आम गोटे नुआ प्रकार स्ट्राटेजी नापी हम जे से गतानुगतिक भाव में से कम दाम रदि हैंडलूम आम तैयारी कर चलवा हुए आम संख्या बढ़ी पारे किंतु आम लाभ बढ़ नहीं एवं लोक मैंने सदा बेले ये दारिद्र्य भितर कषाघात पाऊे. तेणु बर्तमान आमको हुए तो समय आमती कृषि क्षेत्र में समस्ते चाहते नुआ नुआ लोक कृषि क्षेत्र को आसतु जो मैंने पाठ पढ़ी जो मैंने मैनेजमेंट कर कृषि क्षेत्र को आसतु. ठीक से भाव में आप जो परामर्श देले जो मैंने आजिकल शिक्षित युवक युवती जो मान क्वालिफिकेशन अच्छी जो मान एंटरप्राइज अच्छी से मैंने आसतु हैंडलूम सेक्टर को जहाँ फल कि आम गोटे नुआ प्रकार प्रोडक्ट पाइपर जार कि क्वालिटी अच्छी और जार चाहिदा अच्छी चाहिदा रही. बहुत बहुत धन्यवाद. बर्तमान आम जीवा जड़े महिला पाखक आम बहुत पुरुष कही सारे मु अनुरोध करी आमर जड़े भौणी जहाँ विषय रे संजय बाबू अवतारणा कर श्रीमती सुकांती मेहर. सी जड़े नेशनल अवार्ड पाई बुणाकार एवं मु तांको अनुरोध करी जे सी तांकर दृष्टिभंगी ए हस्ततंत्र कौन भविष्य अच्छी कि प्रकार समस्या से माने फेस करुँच से विषय आमको टिके उद्बोधन देवे. मैडम सुकांती मेहर. समस्त को नमस्कार सर. बेसिकली माने आमर आज हस्ततंत्र दिवस उपलक्षे जो आज मते टिके माने चांस देइछंती कहवा लगी से लगी मैं बहुत गर्व मने अनुभव करूची. मु भाभी नथिली जे मो स्वप्न रे एते बड़ बड़ सार मान संगे बसिक गोटे मीटिंग हेबो. मु केबे पाठ पढ़ीनी सार, सत कथा कहूची पाठ बेसी पढ़ीनी, लेकिन मोर कर्मभूमि होची जो बरपाली आपण ना नौछंती सेही बरपुत्र गंगाधर मेहरंकर जन्मभूमि रे मोर भाग्य. आज मु मने करूची जे मु आज एई माटी रे बहु हिकरी मोर कर्म स्टार्ट हेची एई बरपाली गाँ रे सर. तो मोर मो 3टा पॉइंट कहवा लगी मु जरूरी करूची. देखंतु 93 सर मु किछि सिखी नथिली. 93 रो मु 2007 पर्यंत एई बरपाली गाँ रे मोर परिवार सहित समस्ते मते हातरे हाथ देइकरी सिखै छंती. जेंति कि नुआ बहु हेकरी आसिले माने रोसई कळ को जानती मु रोसई कळ न करिकरी मु आज एई हस्ततंत्र रे मोर निज आगो धाडी रे मु हेकरी आसीची. लेकिन मु चाहूची जे एते बड़ स्वप्न केबे देखि नथिली. सेटा तो मोर स्टोरी बहुत अछि सर कहबा को बहुत इटा. लेकिन जिते बेले मो अवार्ड मिलिला 2011 रे सर, सेते बेले मोर अवार्ड मिली सरला परे मते आउ टिके इंटरेस्ट लागिला. तापरे इंडिया हैंडलूम ब्रांड कोन जे मु जान नथिली सर. जिते बेले मोदी सरकार मो हस्बैंड पाइतिले 2014 रे नेशनल अवार्ड पाइतिले सेते बेले इंडिया हैंडलूम ब्रांड मो पाकू सर्टिफिकेट आसी सारतिलानी माने घोषणा जो करतिले सेही टाइम सेही सार रे मते मिलिला इंडिया हैंडलूम ब्रांड. इंडिया हैंडलूम ब्रांड काहे दिन मिलला बहुत लोग अप्लाई करतिले. सेतिला रीट और पिक जोटा कहउचंती वार पोएप्टर जो बुणा होची सेतिरो क्वालिटी मेंटेन न करथबा जुगुरु कटि जाईची. लेकिन मोर क्वालिटी भल मेंटेन थिला, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया थिला. सेति लगी आज जनपद मु गोटे स्मृति रानी डाकी थिले नेशनल वुमेन डे रे मु जाईतिली. सेना जनपद हाट दिल्ली रे मु देखिली जे मोर प्रोडक्ट सेने बहुत बड़ आकारे गोटे डिस्प्ले हेतिला. बहुत खुशी लागला सर. तो इंडिया हैंडलूम ब्रांड जेते बेले मिलिला सर मु चाहूची खाली सेतिक रे मु सीमित रहिबिनी. जेते मु किछि जान नथिली
आगो को आसिली समुद्र को भीतर को गला को गमन कला को बहुत जिनस शिखी पारुची सेति लगी मोर सेति की इंटरेस्ट बढ़ी चली तो मु चाहूची एबे हैंडलूम मते नंबर 1 हैंडलूम मार्क दर इंडिया हैंडलूम ब्रांड मिली जाईची हैंडलूम मार्क दरकार दुई नंबर हैला वर्किंग कैपिटल तमने मोर हैंडलूम जो चलीची मु कम से कम 1 करोड़ रो माने गुटे मते मुद्रा योजना रे समित करा जाऊ जे मोर गुटे मु सेतिरे वर्किंग कैपिटल पाई मु किछि काम करि पारबी नुआ डिजाइन करि पारबी नुआ साड़ी प्रोडक्शन करि पारबी जेमति कि मोर amazon.com रे भी रजिस्ट्रेशन अछि गोकुप संग रे अछि प्राइवेट लिमिटेड रे बहुत लोकन संग रे मार्केटिंग भी ठीक अछि ता परे मोर टेक्निकल सपोर्ट टिके दरकार सर काहे कि टेक्निकल सपोर्ट मो जानी बहुत जानली ने हेले भी टेक्निकल सपोर्ट जदी रही थी संगे मु आगो को बढ़िया कथा आउ टिके जेते बेले इंडिया हैंडलूम ब्रांड मिलिला सर आजी ब्रांड मिलिला बोली मु आईआईटी भुवनेश्वर संगे 4 वर्ष हैला काम करूची सर तांकर जो कन्वोकेशन अछि 4 वर्ष एबे भी वर्तमान मु ऑर्डर पाइची 250 पीस स्टॉल ऑर्डर पाइची तो सेतिल कि मु चाहूची जे एई सब जिंस केमती आकु बढ़िबो आउ केमती मु आकु नै पारिबी जो बुणाकार भाई भौणी अछंती तांको संगे रे केमती शामिल हे पारिबी ट्रेनिंग दे पारिबी सेमती 700 महिला को मु ट्रेनिंग भी दे सालेनी ए सब गुडा को मोर गुडे कंपनी रजिस्ट्रेशन करिछि आ सुकांती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड मोर रिटर्न फाइल भी करूछि लेकिन मो पाठ पढिनी सर जह आउ ए सब जिंस जदी आपण माने जो जोगिंद्र सर कहउतिले मते बहुत खुशी लागिला संजय सर कहउतिले बहुत खुशी लागिला ए खुशी रे मो माने माहिर हे जाईची जे आज एते समुद्र भलिया गुटे हैंडलूम माने हस्ततंत्र दिवस रे आज मते गुटे बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलीची आउ तांको हाथ धरि कि मु केमती चाली पारबी आपण मानकर पूरा सहयोग मो हाथ रे रहिले मु आकु बहुत माने नेबा लगी चाहूची 2 वर्ष हैला आईआईएम संबलपुर मु तांको संगे रे भी कन्वोकेशन रो काम करी आसीची 2 नंबर 3 नंबर हैला आदित्य बिरला एलेंसनी ब्रांड जो अछि सेति भी किछि मु सप्लाई देइची तापरे फेब इंडिया रे भी मु किछि सप्लाई निजे पूरा फील्ड ड्यूटी करी करी स्कूटी टू नै करी पूरा डोर टू डोर नै करी मु काम करी चलीची इथिरे मते बेस खुशी लागुची एई हस्ततंत्र जो सम्मान मते मिलीची एई सम्मान खाली सर्टिफिकेट पाई करी छुपाई के रखी पारिबिनी मु आगा को बढ़िबा लागि बहुत चेष्टा करबी आपण मानकर सपोर्ट दरकार आउ एई मु जो ब्रांड मिलीची ब्रांड रो भी मु मालयेशिया कोलालमपुर मु जाई पारिची काहे कि मु केबे पाठ पढिनी एकला जाई करी केमती आसीची सेटा आपण मानकर आशीर्वाद आर केमती जाईची से मोमेंट मु आपण को प्रकाश करि पारिबिनी माने एते गुडे माने किछि न जानी करी आज एते बाट आसिली आज आपण मानकर सामना रे गोटे मीटिंग रे बसची मते सब जिन सब भूली जाउची सब कष्ट भूली हे जाउची लेकिन एटा आउ टिके गर्व मने अनुभव करछि जो ग्रास लेवल रु मु आसीची सेही ग्रास लेवल रु भाई भौणी बुणाकार रो केमती मु शामिल करी करी केमती आगर जेनरेशन मु आउ काम करि पारिबी आउ तांकू केमती कलर कॉम्बिनेशन रे जंती मार्केट रे छाडी जाउचे गुटे संबलपुरी रो जनता माने बेड रेकॉर्ड रहउची सेटा केमती भलो होई पारिबो से चिंता मु धारण करबी एबे गुटे अपॉइंटमेंट भी मिलिची डिजाइनर पोस्ट रो 6 मास पाई देइचंती सेटा भी मु देखुची काम करिबा लागि केमती नुवा डिजाइन करि पारिबी सबरु बड़ भूमिका होचे मोर हस्बैंड जी से बहुत बड़ मशहूर कलाकार ये हैंडलूम क्षेत्र रे तांकर बहुत गुडे अभिज्ञता अछि से भी मो संगे रे शामिल करी मते से पछरे रही करी मते आज एते आगो बाट आनी जंती तांकर मु केबे ऋण सुझी पारिबिनी आउ आपण माने मते सपोर्ट दियंतु मु ये हैंडलूम क्षेत्र रे आउ आको पढिबा लागि बहुत चेष्टा करिवि सर एति के कहि मो रहउची सर धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सुकांती मैडम आपण पहिले जे आपण शिक्षिता नहंती आपण तो आपण विद्या रे एते निपुण जे जो माने तथाकथित शिक्षित व्यक्ति से माने आपण शिक्षा लाभ करिवार उचित तेणु आपण जो छू आपणकर आवश्यकता विषय रे कहिले कि बड़ी टेक्निकल सपोर्ट दरकार कि बड़ी भाव में अन्य बैंकिंग सपोर्ट दरकार ये सब जिनस मु अनुरोध करी आम ओडिशा कॉर्पोरेट फाउंडेशन रे जो माने अछंती हमर मेंबर जो माने से माने निश्चित भाव में आपण सहित जोगाजोग करिवे एवं जहाँ किछि तांका द्वारा संभव हो पारिबो साहाय्य आपन को देबे एवं आम सहित तो डॉक्टर संजय पंडा अछंती संतोष बाबू अछंती एवं एमाने समस्ते निश्चित भाव में आपनकर
समस्या रे किछिटा समाधान करिया को चेष्टा करी सर आ गोटे मोर जीआई टैग भी मिली जाईची जीआई टैग भी अछि मोर एक्सपोर्ट इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन अछि 2012 रु सर मु सेटा भी किछि करि पारनी सेटा माने मोर नुवा प्रोडक्ट बाहर करि पारबी यूनिक पूरा नुवा इनोवेटिव रे भी काम करि पारबी आ मु आको मार्केट रो लागि भी मोर एटा टेक्निकल जदी सपोर्ट टिके आसी आउची मु निजे माने किछि लोकन को नै करी ट्रेनिंग दे करी मु बहुत गुडे प्रोडक्ट भी माने बाहर करे पारबी मैन्युफैक्चर मु चाहूची जे मोर निज कंपनी रे मु गोटे माने बड़ फैक्ट्री बलिया करी करी केंती हस्ततंत्र लूम पकई करी पावर लूम पकईबी नि हस्ततंत्र ओनली मु सेति पई लड़ीची तापरे देखंतु ए जो गुडाको सब मिलुची सपोर्ट मिलुची सेही सपोर्ट रु आउ टिके आमे केमती आकु बढ़ी पारिबु आ ए जिंस केमती मोर माने पिला माने भी बहुत सपोर्ट दउचंती जोटा को पेपर वर्क रे मु तो किछि पाठ पढिनी मु किछि जानि बिनी तो मोर बड़ पुओ जी अछि एबे तो से लॉकडाउन रे रह जाईची चेन्नई रे पढुतला आसी पारुनी सेठी ताई करी मध्य से ऑनलाइन रे ए जो आपनकर संगे रे जो वीडियो कॉन्फ्रेंस केमती कथा हुए मु जान नथिली मो सान पुओ ए सब गुडा को करे देकिरी से घरे ताई करी मते सपोर्ट दउचंती मोर परिवार सहित भी जड़ित आउ आपण माने भी सपोर्ट देले मु आको बढ़िबी बोली बहुत आईआईटी कोन जे मु जानि थिली सर तांको संगे रे जाई करी बार बार कॉन्फ्रेंस करी करी कन्विंस करे करी 4-5 थर डिफॉल्ट रहिची तापरे जे मु सक्सेस हेची आज को 5 वर्ष हैला आईआईटी संगे रे काम करूची एते बड़ इंस्टीट्यूट संगे काम करूची बहुत गर्व अनुभव करची सर बहुत बहुत धन्यवाद ओके नाउ may I request Mr. Vikash Bhargav, is he available, the textile engineer? Mr. Bhargav, are you available? Yes, sir. Thank you, Patnaik sir. Yes, yes. Johar Actually, to. I'm sorry. We have been talking a lot in Odia language. I hope you are not finding it difficult to follow the proceedings. I picked a lot of things, sir. Okay, please carry on. So, Johar samast Mahila and Bhadra Jana and Namaskar. Actually, yeah, I will have to speak in English only, sir. Now I am switching it over. As you like. Thank you. So, I mean, I've heard from a lot of gentlemen who speak before me, and I could pick up some of the things in Odia language as well. It is good when we see government is trying to do so much things for handloom and people who are working for handloom industry. We are in okay, before I speak, I want to ask a question. How many of us who are right now into Webnair on this National Handloom Day are wearing a handloom product? I think we can count on fingers, say 2, 3, 4 only. Why it is so? The biggest main reason which government also, I mean, they try to find out what is the reason why people are or customers are not buying handloom. That is, the product is not good. And what if we are trying to concentrate, you give incentive to handloom weavers, you give them some business, because handloom is traditional, handloom is something wherein low income group people are there and you want to help them and buy the products. That will not sustain for long. The thing which will sustain is if we can help guiding handloom weavers to give better product. How that better product will come? Now let us see. I mean, I have heard name of NIFT from many speakers. Guys, NIFT is, they create very good intelligent brain to convert fabric into nice garments. But who will make the nice fabric? Nobody talk about textile expert. The need of textile expert to come into handloom is as important as you bring in people from NIFT. There are institute in India which is 75 years into textile. Their alumni is into working into all across world into all the brands. So if you are connected with these guys, they will guide you what kind of fabric is required, what kind of designs are required, what kind of colors are required. They will also help you what sort of compliance you need, because once you are offering your product to multinational brands or some brand of repute,
You cannot use any kind of dyes or chemicals into your product. So what I feel is there is a very big gap, and nobody talk about to make the product itself on merit, so that a market, a demand is created. Instead of what we are doing is we are trying to create help group, we are trying to create financial support to these handloom weavers. In my view, I mean, I will come back on what I want to say is if how you can make a product better. The first is we are trying to sell what we are making. It should be, we should make what customer want. Once we started understanding customer requirement, then we can create a brand. Two, we need to improve our quality. I remember I got an opportunity to attend one India Today conclave. It was Khadi chairman was there, and I asked, sir, when the defects will be removed from this Khadi and handloom fabrics. So the gentleman replied me, defect is effect. And I'm sorry to say, that is a, that means we have accepted that we cannot improve the quality, which is not the case. If you bring the right talent, if you bring that textile technologist into handloom, they can improve quality in a drastic way. Two, bigger volumes are not available. I remember I am in touch with Mr. Gajendra Sahu. We come across with two inquiries. I will give you example. One is Indian brand. They wanted to buy ikat fabric, and they wanted to buy at least 15,000 meters in a single color and single design. We do not have that capacity. We couldn't do it. So we lose the order. Number two case, we have an export inquiry for bags, handmade. We tried one help group, women help group society in Odisha, but they cannot produce good quality of bags. So we lose the order. So the training, the connectivity with them is very, very important. Third is, I think couple of gentlemen has put light on it, that if we can increase efficiency and if we can reduce cost a bit, then we can get better marketability for handloom product and better acceptance by customers. How it can be done? Again, if we do automation without using of electronic or electricity, which is possible, mechanical modification, you can improve not only quality, but also efficiency and consistency in quality, which in turn will increase the salability of your product along with the cost of manufacturing. And then very important is designing. Again, I will say NIFT is very good. They are brilliant, but they are very good in designing from fabric to garment. Please note my statement. They may not be good in designing the fabric itself. So for designing the fabric, you need textile designer to come in. They will color and they will give you the direction wherein you can use your traditional design little bit international market. That's all. If anybody. Patnaik sir, back to you. Okay, thank you, Vikas ji. Thank you for making a very important point. That if you want to improve the quality of handloom products, then we should concentrate on the fabric also and not only on the design. Okay, thank you so much. And now I will take you to another lady who is with us, Arpita Panda. Arpita Panda Ratha. अछंती से आपण अछंती की आज्ञा आज्ञा अछि अच्छा आपण टिके आपनकर इंट्रोडक्शन देबे जे आपण दोहिता बोली आपण कोनसे ऑर्गेनाइजेशन से आपण संपर्क मते जा कुआ जाई छी तने आपण टिके निज विषय रे गोटे मिनिट कहिबे एवं हम की प्रकार कार्यानुष्ठान ग्रहण कले हमें हैंडलूम रो प्रसार करि परिबा के विषय आपनकर मतामत काइंडली दियंतु प्रथमे एटी सबु एमिनेंट स्पीकर्स
and all viewers समस्त को मोर नमस्कार and happy Handlooms Day. आज आम समस्ते ये मिसिकी we are here on this podium for celebrating handloom. Handloom हेला आम कल्चर इंडिया रे रिच कल्चर ट्रेडिशन को handloom ही डिफाइन करे. आम क्लोथिंग फॉर्म्स अ वेरी इंपोर्टेंट पार्ट जोटा कि आमर भारत वर्षर ट्रेडिशन को बाहर जगह रे आम मान को माने आमर ग्रोथ आम कल्चर आम ट्रेडिशन ता विषय डिफाइन करे. तो मु मोर निज ब्रांड दुहिता को एस्टैब्लिश करची. दुहिता मु 2015 रे एस्टैब्लिश करली. मोर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाइज मु आईटी इंजीनियर एंड मु 2 इयर्स गवर्नमेंट सर्विस रे रहिली. बट मु जेते सान बेलठू मोर हैंडलूम प्रति गोटे अट्रैक्शन. हम घरे आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली. मोर जॉइंट फैमिली मो फैमिली रे मो माँ भौणी मोर आंटी समस्ते हैंडलूम पिन्हती. तो तांकू देखि कि मते मु सब बडे भाबे ए साड़ी गुडा तो केमिति तयारी होची, एटा को किए करूची, व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड दिस, हु इज मेकिंग दिस. तो से थ्रू मोर गोटे इनक्विजिटिवनेस रहिला टुवर्ड्स टेक्सटाइल्स टुवर्ड्स हैंडलूम. मु जानिया पे चाहिली एटा को केमिति एटा तयारी होची, एमा ए या पछरे किए माने को माने एटा को तयारी करूचंती. तो सेति पई मु मोर गवर्नमेंट जॉब क्विट करी कि आई फॉलोड माय पैशन. आई स्टार्टेड दुहिता एंड सेथिरे मते मो हस्बैंड एंड मो फैमिली बहुत सपोर्ट करले इन एस्टैब्लिशिंग दुहिता इन द ईयर 2015 नवंबर. तो मोर मेन मोटो रहिला मु गैप टा ब्रिज करबी. एक्चुअली जो माने प्रोड्यूस करूचंती एंड जो माने सेमान को वाइड स्प्रेड मार्केट मिलुनी, से माने निजे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करि परनांती. तो एंड मु तांको भितरे जो माने हैंडलूम्स पिंथुचंती हैंडलूम पैट्रन्स, तो तांको भितरे गैप टा मर्ज करिया पे चाहूची. तो मु सेई टुवर्ड सेई डायरेक्शन रे काम करिया पे चाहूची. तो मु वीवर्स भाई मान का संगे रे मिसी की तांका संगे क्लोज तांकू हेल्प करूची. बिकॉज़ हमर जनरली गोटे धारणा रही जाईची हैंडलूम हैला खाली हम जेजेमा आई एमारे जो फैब्रिक जो अपैरल्स गुडा को पिन्हंती सेटा हैला हैंडलूम. नुआ जनरेशंस मान को पई हैंडलूम नुहे. तो बट मु सेई थॉट प्रोसेस टा को चेंज करिया पे चाहूची. मु सेई टुवर्ड्स काम करिया पे चाहूची. बिकॉज़ हैंडलूम को हमें गोटे वर्क आउटफिट हिसाब रे भी कंसीडर करि परिबा. काहे कि आज काली सब हमें जब बिजनेस मीटिंग्स होची, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जतले निजे को रिप्रेजेंट करूछु, हमें हैंडलूम पिंदी की भी एज अ वर्क आउटफिट भी हमें हैंडलूम को पोर्ट्रे करि परिबा. तो सेई डायरेक्शन रे मु काम करिया पे चाहूची. एंड जेहेतु मु से हैंडलूम ता को मु रिवैम्प करिया पे चाहूची. काहे कि जे हमर नॉर्मल जो ट्रेडिशनल डिजाइन आउट हमर जो मॉडर्न डिजाइन ताको मर्ज करिकी गोटे कंटेम्पररी वर्क डिजाइन पैटर्न थ्रू रे मु हैंडलूम को प्रमोट करिया पे चाहूची. बिकॉज़ हमर कस्टमर्स मान के संगे हमें डायरेक्टली इंटरैक्ट करछु. तो तांको व्यूज कलेक्ट करिकी हमें वीवर्स मान को से तांकर जो रिक्वायरमेंट हमें जणौछु और से रिक्वायरमेंट हिसाब रे हमें काम करछु, जो जहा द्वारा कि हैंडलूम रो डिमांड इंक्रीज हो. तो एथरे हमको कस्टमर स्टडी करिया बहुत दरकार पडुची. कस्टमर मान का संगे इंटरैक्शन बहुत हेल्प करूची. तो से थ्रू रे हमें वीवर एंड इवन हमें वीवर्स मान के संगे जो काम करूछु, तो कस्टमर मानकर डिमांड कस्टमर मानकर रिक्वायरमेंट सहित हमें करूछु. तो सेटा हला हमर मेन मोटो, दैट इज ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द वीवर्स हु आर द प्रोड्यूसर्स एंड बायर्स हु आर द कंज्यूमर्स. Any suggestions what should be done? मेन प्रॉब्लम हमें जोटा अबिका देखुछु वीवर्स मानकर मेन प्रॉब्लम रहूची सेटा हला तांकर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहूची. तांकू प्रॉपर्ली माने कम्युनिकेट माने करि पारुनांती, जहा द्वारा हमें माने एज स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हमें तांका संगे क्लोजली वर्क करूछु. तांकर थॉट प्रोसेस तांको व्यूज हमें हम कंज्यूमर्स मान के पाखरे पहुंचौछु कि दिस इज ए सपोज मु गोटे साड़ी पिंधी छी, ए आर्ट ता हे जी झोटी मोटिव एटा को थॉट प्रोसेस ने कि वीवर वीव करी छी एंड एटा वीव करिबार पछरे कोन स्टोरी रही छी सेटा हम कंज्यूमर मान को जणौछु, जहा द्वारा कि से माने बेसी इंटरेस्ट नउछंती इन वेयरिंग हैंडलूम. हमें वी आर वर्किंग फॉर इंक्रीजिंग द मार्केट डिमांड फॉर हैंडलूम. हम मान को बहुत बुझिया को पडुची व्हाट इज हैंडलूम. बिकॉज़ हमर जो अबिका पावरलूम सेक्टर इंट्रोड्यूस हैला परे एक्चुअली हैंडलूम रो डिमांड बहुत कमी जाइथिला. बट हमें सेटा को बढ़िया पे वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज हमर जो हैंडलूम रो डिमांड अछि सेटा को हमें बढ़िया पे चेष्टा करछु.
एंड ता पई हमें वीवर्स मानकर जो थॉट प्रोसेस गोटे गोटे साड़ी जोटा से माने वीव करूचंती सेटा कोन भाबी कि वीव करूचंती कोन ता ताको मोटिवेट करला ता पछरे ताको थॉट प्रोसेस ता हमें कस्टमर्स मान को जणाउछु जहा द्वारा से माने इंटरेस्ट नउचंती हैंडलूम पे आ गोटे साड़ी पछरे केते एफर्ट्स जाईची लाइक जेमती गोटे साड़ी वीव करिया पई गोटे लूम सेटअप करिया पई एटलीस्ट ताको मैक्सिमम 4 to 5 डेज लागुची ताका माने प्री वीविंग प्रोसेस पे एंड आफ्टर दैट वीविंग पाई ताको नेक्स्ट आउट 10 डेज लागुची फॉर जदी डिपेंडिंग ऑन द इंट्रिकेसी ऑफ द डिजाइन्स तो सेटा पाई हम जो एफर्ट ता देइचंदी जो वीवर्स माने जहा थ्रू रे से माने केते कष्ट करूचंती गोटे लूम रे 3 जण वीवर मैक्सिमम काम करला परे दे प्रोड्यूसिंग अ साड़ी एंड गोटे साड़ी रे एंटायर फैमिली इज बीइंग इन्वॉल्व गोटे वीवर रे एंटायर फैमिली इज बीइंग इन्वॉल्व तो से जो हार्ड वर्क ता भी हम कस्टमर्स मान को पखे जणाउछु कि एतिके एफर्ट गला परे आपण जो साड़ी ता नउचंती सेही से पिंदुचंती सेही साड़ी तार वैल्यू हैला एतिकी तो सेति पई से माने कस्टमर्स मानकर एंथुसियाज्म ताको इंटरेस्ट ता प्राइम बेसी बढ़ुची तो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस गैप जोटा कि गैप ता रहिची हमर वीवर्स मानक भितरे आ कंज्यूमर्स मानक भितरे वी आर ट्राइंग टू ब्रिज दैट तो दुहिता टर्म ता भी मु सेति पई चूज करची बिकॉज़ दुहिता इज अ नोन टर्म ओडिया टर्म जोटा कि गोटे नुवा विवाहित स्त्री पई यूज करा जाय जे कि ता निज बाप घर साइड एंड ता सासु घर साइड मझी रे गैप ता ब्रिज करे तो सेमिति हमें दुहिता है कि हमें हमर प्रोड्यूसर जो माने कि हम वीवर भाई भौणी माने आ कंज्यूमर जो माने कि किणुचंती हैंडलूम्स तांको भितरे जो गैप ता रहिची ताको हमें मर्ज करिया पे ट्राई करूची थैंक यू हैव यू फिनिश्ड Thank you so much. Thank you for providing me this platform. And मो सब वीवर्स भाई भौणी मान को गोटे आज का हैंडलूम डे रे भी बहुत बहुत थैंक यू कहूची बिकॉज़ तांको पई हमें माने सस्टेन करूचु एंड तांकर ए जिंस तांकर जो क्राफ्टमैनशिप रहिची ता पई हम इंडिया को प्राउडली हम कहि परचु हमर इंडिया रे ट्रेडिशन बाहर देश रे भी हम पहुंचे परचु जा पई हमको बहुत अप्रिशिएट करा जाउछ सो बिग थैंक यू टू ऑल द वीवर्स थैंक यू मिसेस पंडा अपन जो कार्य वर्तमान करूचंती से विषय रे पूर्व वक्ता माने कहउतले जे नुआ नुआ पीढ़ी रो पिला माने वर्तमान आसीबा दरकार एवं हैंडलूम को से माने मॉडर्नाइज करबा दरकार कंटेम्पोराइज करबा दरकार एग्जैक्टली एवं मार्केट डिमांड हिसाब रे हमको प्रोडक्शन करिया कथा जहा द्वारा कि कस्टमर सेटा कस्टमर मान को इंक्रीज माने हमर जो दरकार सप्लाई टा इंक्रीज करबो तो सप्लाई इंक्रीज करले ऑटोमेटिकली इकोनॉमी इंक्रीज करियो बिकॉज़ हमर भारत रे आफ्टर फार्मिंग वीविंग इज द मोस्ट प्रेफर्ड ऑक्यूपेशन बिकॉज़ से वीविंग आर्ट ता ही कमी कमी जाउचे बिकॉज़ नेक्स्ट जनरेशन से माने रेडी होना टू टेक अप वीविंग तो तांको से तांकर रीजन तांको कोन पई से माने वीविंग छाड़िया पई चाहउचन सेटा बुझी कि वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट yes and you should restore the prestige of weaving so we should also work in that direction exactly we should work towards that and सेटा हम समस्त को माने मिसी के हमर एफर्ट रहले डेफिनेटली वी विल सक्सीड बहुत बहुत धन्यवाद अपन जो दुहिता संस्था गठन करचंती अपन सदा बेले समस्तंकर दुहिता है कि रहिबे धन्यवाद थैंक यू सो मच सर थैंक यू now we move to वर्तमान मो रिक्वेस्ट करबी श्रीयुक्त गजेंद्र कुमार साहू अछंती कि हम भितरे जे कि वाइस चेयरमैन टेक्सटाइल एसोसिएशन अछंती श्रीयुक्त गजेंद्र कुमार साहू इज ही देयर गजेंद्र कुमार साहू अछंती कि से अछंती तो वर्तमान देखा जो ऑनलाइन अछंती he is unable to unmute himself. अच्छा can somebody you can see Gajendra Babu but unmute kar parnanti somebody has to unmute him. can it be done Gajendra sir mo apno access douchi tique unmute karantu apno yes now I can speak I think yes some host has to unmute him now yes sure thank you Mr. Patnaik Dr. Sanjay Panda Sito Joy Gunjan Panigreh Mahapatra and all eminent speaker aji हस्ततंत्र राष्ट्रीय हस्ततंत्र दिवस अवसर समस्त को मोर शुभकामना जिते भी आज आमर वीवर भाई भौणी अछंती आर समस्त अछन समस्त को मोर शुभकामना और आज मते ओसियत तरु कहिबार मौका दिबार बहुत बहुत धन्यवाद हमें आज ये जो हैंडलूम रा चैलेंज कोन अछि से ऊपर हमें आज डिस्कस करू छु हमें
तो मेन कथा है मु सुनली डॉक्टर पंडा सन को भी सुनली बहुत गुड़ाए आमर सबू यार सो मेनी पॉलिसी तापर भी धीरे धीरे कि आमर सबू डे बाय डे वेबर संख्या गुड़ाक कमी कमी जाऊ एंड बाकी समस्त गुटे कथा कहते मिस्टर संतोष महापात्र भी सही कथा कहते जे आज धीरे धीरे आम आर्ट गुड़ाक जाई मतलब खत्म होगा जाऊ और आई थिंक मु एग्री भी करूची कि आफ्टर 15-20 वर्ष पर एटा खत्म भी हो बाकी से हिसाब से मु गुटे कथा कहूँ समस्ते जिते बेले कहते सब खत्म हो ग्लोबल सिनेरियो रे जदि आमे देखिबा ताहले गुटे बहुत बड़ अपॉर्चुनिटी होची सेपरे राइटली मिस्टर विकास भार्गव भी ऑलरेडी स्पीक कि वी आर हैविंग सो मेनी इंक्वायरी ग्लोब इज बहुत बड़ ग्लोब इज बिग से हिसाब रे देयर आर बिग अपॉर्चुनिटी एंड आई डोंट नो एते अपॉर्चुनिटी थिला परे भी आमे लूज करू आम पाखरे ऑलरेडी आई एम आल्सो वर्किंग विथ डिफरेंट ग्लोबल ब्रांड like in US, European brand and Japanese brand and domestic brand also. In that point, I'd like to say कि there are so many opportunity किंतु आमे लूज करूछु तार केतरा कारण मु कहबा को चाहूबी जेते आमे पहला कथा तो जेते प्रोडक्ट गुडा को आमे करूछु एठी से प्रोडक्ट मेन कथा ले गुटा साड़ी हैला या साड़ी हैला औ हैला बेडशीट हैला ये सब प्रोडक्ट गुडा करूछु जोटा कि साड़ी अगर आपण देखिबे मैक्सिमम कंजम्पशन जोटा होची सेटा हमर ओडिसा भितर रे हो तापरे बाहर को जदी परसेंटेज हिसाब रे देखबा 80% खडे हमर ओडिसा भितर कंजम्पशन जे बाहर को 20% खडे होतो बेडशीट हला एयर कंजम्पशन भी माने माने हमर स्टेट बाहर बहुत कम होची हमर सब कंजम्पशन उडा तो या ऊपर मु कहबी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट गुडा को हेबा कथा जेतु मु देखुतली एबे मो वाइफ भी डिजाइनर से ए सब वैल्यू एडेड जिनिस गुडा तयारी करथिले सपोज अर्पिता पंडा मैम एबे कहउतले ये तो कोडा मु सुनतली बहुत बढ़िया से नोआ वैल्यू एडेड डिजाइन गुडा को हवा कथा तो ये सब जैसे एबे लेडीज गुडा करो कान रो जेमती एटा कुंडली हला एटा गोटा राखी तयारी हे जे एते ऑर्डर ए गुडा को थिला वी आर नॉट एबल टू सप्लाई दिस इज हैंडलूम फैब्रिक राखी यू कैन सी बट एते बिग माने इंक्वायरी थिला इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिक्योर सब सोर्स करी देवाटा एते टाइम रे बड़ा चैलेंज व्हाट मिस्टर विकास भार्गव अभी से क्या ऊपर कपड़ा थिला मतलब देयर आर फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड हम पाखरे बिग क्वांटिटी से माने इंक्वायरी करथले हमको हम गोटे टाइप बिजनेस करबा को चाहू वी आर एंड डेस्परेटली वी वांट दिस टाइप ऑफ फैब्रिक फ्रॉम यू एंड वी आर आल्सो गोटे एमओई करी करी गोटे सस्टेनेबल मार्केट केमती क्रिएट हे परिबो यांकर संगरे जते भी ओवर माने अछंती तो एते अपॉर्चुनिटी थिला सेटा तो हमको आइतला हमें जेतले देखिलु माय वाइफ और मी वी आई जस्ट वी वेंट टू द बेसिकली आई एम फ्रॉम सोनपुर डिस्ट्रिक्ट बट लास्ट 22 ईयर आई एम इन दिल्ली तो माय नेटिव प्लेस इज सोनपुर डिस्ट्रिक्ट तो मैं मु जेतले गली से जागो समस्त को जेतले देखली वेबर मोर गां रे नियर अबाउट 20% आर वेबर जानि छी तार हिसाब ता जानि छी जे केते को लोक केते देई पारेबो ए कपड़ा गुड़ाक तो से हिसाब रे जेतेले आमे सेठु गलु समस्त कहले ठीक अछि आमे देई पारेबो बट एते बड़ क्वांटिटी 15000 या 10000 क्वालिटी तार मेंटेन करी दैट इज वेरी डिफिकल्ट देन अगर आपण जदी यूरोप जिबे या यूएस रो को गुटे जदी किछि माने तार इंक्वायरी आसीबो एते बल क्वांटिटी से जगार केमिकल इक्वेशन वाला से गुडा स्टैंडर्ड दैट इज वेरी डिफिकल्ट तो सेटा बहुत गुडा चैलेंज सेटा गुडा को अछि तापरे मेन कथा हला क्वालिटी गुटे हला क्वालिटी आमे देखु छी सब बेले आमे इमोशनली जाउ छ क्वालिटी बेले तार केमती हैंड फील हेबो मतलब केमती दिसु मतलब लुक वाइज केमती तेबो से ऊपर आमे देखु छ बट क्वालिटी इन द सेंस की व्हाट अभी इंजीनियर विकास भार्गव से क्वालिटी माने तार इंजीनियरिंग पार्ट ता वी शुड आल्सो सी द इंजीनियरिंग पार्ट आल्सो एंड को भी पॉलिसी आमे तयारी करू छु गवर्नमेंट रो वी शुड टेक द एक्सपर्ट ओपिनियन आल्सो लाइक एनी टेक्सटाइल डिजाइनर ऑलवेज डिजाइनर पार्ट डिजाइनिंग पार्ट ता हमें देखु तार इंजीनियरिंग पार्ट ता हमें बहुत जगह हमें लैक करू आजी गुटे कथा हमें कहू जे आजी हम ओडिसा रे नहीं एटा गोटे नेशनली जते भी हमर वीवर्स गुडा को अछंती गुणाकार गुडा अछन धीरे धीरे कम होते जाउ माने कम होई जाउ तार सेटा केमती ही परबो और किंतु गोटे ग्लोबल मार्केट भी अछि बाजार भी अछि एटी वीवर भी कमु छंती कहीं ना कहीं गोटे गैप रही जाउ अदर सरकार को नीति रे हेती पे जो भी नीति होची वी शुड टेक द एक्सपर्ट ओपिनियन आइदर
from all designing part, engineering part and all type logistic part, all part combine करी आमे जदि नेले ताहले बोधे जो एबे जो सब्सिडी कथा सब आमे कहूजु जे कोई भी बुनाकार मानकु आमे सब सब्सिडी देबार कथा एटा बिल्कुल देबार कथा ताकू रिहेबिलिटेशन पय सब किछि साहाय्य देबार कथा बट आमे ताकू कैपेबल भी तो केते आमे माने ई सब करबा से आमे कैपेबल हेबे आमे एंती गुटे वी शुड मेक ए सच टाइप ऑफ माने गुटे कोन डिजाइन करबा कथा से गुडा को सो दैट दे कैन earn their own money, they can sustain for a long term. से जिनिस को हमको देखि पाइ पड़बो आ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जोटा कहली बहुत गुडा प्रोडक्ट अछि जेंति हला ए कुंडली हला तापरे कोन टाई हला राखी हला तापरे माने जेते भी हम होम फिनिशिंग जो गुडा कहला सब गुडा को एक्सपर्ट तार स्टिचिंग गुडा को केमति हला ए सब गुडा को प्रॉपर वे रे जदी हबो ताले विभिन्न ग्लोबल ब्रांड आज अछि डोमेस्टिक ब्रांड गुडा ता संगे काम हि रही पारेबो वो तो केबे भी भाबु नै जे सब गुडा को आर्ट केते कला केते बेले भी मृत्यु नै कला रो केते बेले भी मृत्यु नै और ए सब गुडा को भी गवर्नमेंट रे एते पॉलिसी हल्ला परे एते एक्सपर्ट हल्ला परे कोन पय हेउजी मु सरा बुझी पारेनी आउटपुट कोन पय आसनु तापरे तर्जमा हेबा कथा तापरे सब देखिबा कथा कि कोन तार लू फॉल्स कोठी रहउची से ऊपर हेबार कथा अरे प्रोडक्टिविटी ता हमको प्रोडक्टिविटी ता भी गुटे बहुत बड़ चैलेंज आज डेट रे ग्लोबल ब्रांड रे या को भी ब्रांड जदि बल्क क्वांटिटी जदि मागुची आज तो मिस्टर विकास बारबक राइटली सेड कि 15000 खाली बड़ ब्रांड अगर से जदि मोर देन 50000 लाइक 20000 50000 जदि मांगीबे से टाइम रे हम किमती देबा इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू सप्लाई अ बिग मतलब क्वांटिटी दिस इज आल्सो एक बिग चैलेंज बट दैट इज पॉसिबल आल्सो अगर टेक्निकली जदि हमें से जो बीम गुडा को होची ताकू जदि ठीक हिसाब रे करी करी हमें समस्त को देई परिबा so that also हमें से गुडा को करी करी आकू करी परिबा से गुडा तापरे आ गुटे कथा हला जे क्वालिटी हला मार्केट सस्टेनेबल मार्केट अपॉर्चुनिटी हला वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हमें करी परिबा ताले तापरे प्रोडक्टिविटी भी हमें बढ़ाइबार कथा so that ए सब जिनिस गुडा को आकू सब किछि होई परिबो एटा मोर गुटे एटा रहला आ जेते बेले भी जो भी पॉलिसी अछि से पॉलिसी रो लैकिंग पॉइंट कोन सब बेले सरकार को ब्लेम करले हबनी एक्चुअली always you cannot we should not blame government or anyone there is a big लोक ता बहुत बड़ एक्चुअली और आज डेट रे नेशनल लेवल रे ओडिसा रो जे भी देखा जाए 4 करोड़ या 4.5 करोड़ लोक अछंती सेठी तापरे भी हमर कंट्रीब्यूशन नेशनल लेवल नाही बट अपॉर्चुनिटी बहुत अछि मु जेते थर भी जाई छी अच्छा निजे मु एबे गुटे हाथी रे मते ऑर्डर मिलथला जर्मनी रो मिलथला एटा हैंडीक्राफ्ट रो थिला एटा मु सोनपुर जिल्ला रे ताकू हमें जाईकरी मोर गुटे सांग थिले मु तो ओडिसा फ्रीक्वेंटली जाए बट सेठी रही पारेनी तो मोर गोटे सांग भुवनेश्वर सांग थिले बट ही फ्रॉम आल्सो सोनपुर उलुंडा ब्लॉक रो सेठी से महिला मान को जेकरी ट्रेनिंग देला परे 25000 हाथी रो गुड क्वालिटी हाथी तयारी गले छोट छोट हाथी जोटा भीतर नडिया कथा देकरी ऊपर सुपली बांधी करी सेडा देले बट ही कैन सप्लाई ओनली आई थिंक 6000 ना 7000 हाथी दे पाले हाथी रो क्वालिटी बहुत बढ़िया थिला बट 25000 हाथी दे पाले ट्रेनिंग देला परे भी तो से कोजी प्रोडक्टिविटी बहुत कमी गला जर्मनी रे जोटा थिला से लोकटा भी तासर रिलेशन भल थिला से तार गुटे निज को बहुत प्रॉब्लम फेस करबा पड़ला सेटा तो एही परे जदी हमें ग्लोबल ब्रांड हैला कि अन्य ब्रांड संगे गुटे ऑर्गेनाइज तरीके रे जदी हमें करबा सो दैट इटा यार बहुत बड़ा मार्केट है जो होई परिबो बट ओपिनियन नेबार कथा एक्सपर्ट ओपिनियन ने बता खाली गवर्नमेंट पॉलिसी तैयार करले किछि होबनी यार को गुटे केमती भाबरे बाजार संगे जोडी करी तार माने ताकू केमती इंप्लीमेंट करी कि तार रिजल्ट आसी परबो से ऊपर हमें सबले देखिबा कथा आ माने हेबा कथा वस्त्र जोटा कहूँ सब जिते भल वस्त्र और हैंडलूम वस्त्र गुड़ाक गोटे मनुष्यर योग्यता को बढ़े दिए मुझे संस्कृत श्लोक कहवाक चाहिए तो मुझे संस्कृत गोटे श्लोक कहवाक चाहूँगी वास प्रधानम खलु योग्यता वासो विहीनम विजायते लक्ष्मी पीतांबरम वीक्ष दधो सुकन्याम चर्माबरम वीक्ष विषम समुद्र अर्थात योग्यता जो है मतलब मैं थोड़ी सी हिंदी भी बोल दूं दूसरे भी हिंदी पैनलिस्ट हैं वो भी समझ जाएंगे वास मतलब वस्त्र एक मनुष्य का जो है मूल प्रधान तत्व है जो किसी भी कोई भी अच्छा कपड़ा पहनता तो उसका जो क्वालिटी उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है जैसे हमारे जो
जो भी संबलपुरी डांस हो गया या कुचिपुड़ी डांस हो गया, ओडिसी डांस हो गया, जब कपड़ा पहनते हैं सुंदर जो हैंडलूम वाला, उनको एक दूसरे हिसाब से आपको देखने को मिलता है। ये है कपड़े का जो है हस्ततंत्र अगर है, हाथ से बुना हुआ कोई कपड़ा है, आज के हस्ततंत्र दिवस के अवसर में वही बोलना चाहता हूँ, तो वो आदमी की कॉन्फिडेंस बढ़ाता, आदमी की जो क्वालिटी बढ़ा देता है। बासो विहीनम बीजाते लक्ष्मी, जिसका कपड़ा ठीक ठाक नहीं है, बासो विहीनम मतलब जिसका कपड़ा ठीक नहीं है, बी जहाती, जाति मतलब त्याग कर देती है लक्ष्मी, लक्ष्मी भी छोड़ के चले जाती है उसको, मतलब यही है, यही लिखा गया। पिताम्बरम भिक्ष ददो सुकन्याम, जेतेबेले समुद्र मंथन होइतला सेतेबेले हमर समुद्र देवता भी विष्णुंकर पिताम्बर भल वस्त्र देखिकरी नियर कन्या लक्ष्मी को भी तांको सारे ब्याह कर दिले। तो एटा भी गुटे कपड़ा हमर वस्त्र गुटे अछि लेखा हिची, चर्मावरम भिक्ष विषम समुद्र, माने ये भगवान हमर जो शिव भगवान चर्म वस्त्र पिंधिले ताकू भी तार चर्म वस्त्र देखिक ताकू विष पान करवार लगी भी कहा जाता। तो इसलिए गोटे वस्त्र बहुत गोटे गोटे इम्पोर्टान्स अच्छी, प्राधान्य अच्छी एक्चुअली। तो से हिसाब से हमको आज आगू बढ़िया पड़ो। ग्लोबाल बहुत बड़ गोटे ग्लोबटा बहुत बड़, आम ओडिशार 4 करोड़ 4.5 करोड़ आज आम कथा होचु, तार केमती आगू हो पार सेटा गोटे एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं तार इंजीनियरिंग प्लान है एति कहते मैम भी कहते बत्तिता पंडा मैम कि तार टेक्निकल केमती हे माने तार गोटे टेक्निकली ताकू केमती माने ई पोर्टल रे केमती करा जिवो, बट सरफेस रे ताकू स्ट्रांग करबा बहुत जरूरी है। खाली साड़ीटा नो डाउट आम जो डिजाइन गुड़ा इट्स वर्ल्ड क्लास, नो डाउट, इतनी किसी डाउट नहीं, बट आमे बजार हिसाब रे केमती ताकू गोटे नुआ बजार हिसाब रे केमती गोटे नुआ डिजाइन डेवलप करी गोटे सस्टेनेबल मार्केट करि पारबा और बल्क क्वांटिटी रे करि पारबा। और जो 3-4टा कम्युनिटी बेसिकली एटा बुना ये जो बुनाबुणी करती मेयर कम्युनिटी हला और 3-4 अछि, अन्य कम्युनिटी मान को भी नहीं ट्रेनिंग देकरी भी ये सब ऊपर आमे चर्चा करबा कथा। आईएसटी रो कथा कहतले, आईएसटी रे जेते बेले भी स्टूडेंट गुडा पास आउट होजंती, जेमती मेडिकल हमर ई इटा कोन के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज रे डॉक्टर पास हला पर भी समान एलोपैथिक रो सब गुडा लिखुचंती, सेमती आईआईटी पास कला बेले समान हैंडलूम सेक्टर रे बोधे केते काम करछि मु जानि नि एक्चुअली, बट दे आर वर्किंग ऑन पावरलूम आल्सो। तो ताकू केमती तांकर जो स्किल गुडा समान जो ताकू ट्रेनिंग दिया हो, सरकार तांको ऊपर पैसा खर्च करूची, सेटा भी केमती तांकर को प्रोडक्टिविटी ए सब जिनिस रे हैंडलूम सेक्टर रे केमती गोटे नवा जिनिस होई परबो से ऊपर भी हमें ध्यान देबार कथा। आ बहुत बहुत धन्यवाद मते कहबा को सुजोग देइ पारो मिस्टर पटनायक और ओसीपी रो सब कर्मकर्ता मान को समस्त बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद गजेंद्र बाबू, आपण बहुत नुआ कथा कहले, आपण बहुत आशार संचार कले जे पृथ्वी रो मार्केट एते बड़ो, हमें हैंडलूम जो माने हैंडलूम सेक्टर रहिचंती से माने से मार्केट को मीट करबा पई केमते प्रोडक्शन बेसटा को बढ़ाइबा दरकार, स्ट्रीमलाइन करबा दरकार, क्वालिटी मेंटेन करबा दरकार, अनेक उपादेय कथा आपण कहिसंती। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान मो रिक्वेस्ट करिवि क्षितिश बाबू को, तांकर आ शीघ्र से जीवा पई चाहउचंती, तांकर आ गोटे वेबिनार एंगेजमेंट अछि, तांको मु कहिबि तांको रिक्वेस्ट करिवि कि वर्तमान एमसी एमडी अछि टचर सिल्क रो तांकर मतामत आज रखिबि। उपयुक्त क्षितिश बाबू। थैंक यू। नमस्कार समस्त को। मोर ओडिया एते भलो नहीं, तो मु जदी भूल करिवे आपण मते क्षमा करिवे। आई हैव बीन अवे फ्रॉम ओडिशा फॉर अ लॉन्ग टाइम and otherwise also I am Gujarati but born and brought up in Odisha. Mo last 20 वर्ष हला I have been working in the tussar silk sector. More primary focus is livelihood. It is not art and craft. So from that perspective मु आपन को संगरे निजर insight share करिया को चाहिबी। See, all of us agree here. मो आगु जिते लोको कथा हेले समस्ते agree कर, all of us are agree that आमो sector is ailing. It is unwell. Different people have spoken about different symptoms. Fact is, let us not look at it from art and craft. Let us look at it as a livelihood activity. 200 years back, handloom weaving was the major technology for production of fabric. Today, technology has
advanced to stage where you have air jet looms, you have water jet looms, etc. Today, even a 100-year-old power loom produces 3 times the amount of fabric that you can produce on handloom. To give you an example, and I'm sure a lot of you would have personal experience. In Bhagalpur, ame jo luga, plain luga, handloom re, we are able to produce 4 meters a day. Same kapda ta power loom re 18 meter tiyari hochi. Now, how can you fight in the market with this kind of productivity differential if there is nothing else differentiating your product? Primarily, lot of weavers are trying to compete in the market with very plain stuff. And obviously they cannot. It's like, mu ghoda gadi dhari kari mu jodi railway station samna re chhida rahibi a mo padisa re gote bus achi mu bi bhuka rahibi mo ghoda ta bi bhuka rahibo. There will be no business for me. When the bus can carry a person in half an hour, it will take me 3 hours to take the passenger. Which passenger will sit in my car, in my ghoda gadi? So the reality check is, we have to say that mass production of generic plain fabric, which can be done by power loom and other things in a much cheaper manner, should not be practiced on handlooms. Now, what can we do? It's like, mate choto bele mate gote story mane paduchi. Kartike au Ganesh Bhagwan मझीरे गोटे कंपटीशन है तो ये है कि किए पृथ्वीर चक्कर मारिक फर्स्ट आसीबो सेटा कंपटीशन है तो कार्तिक तो सांगे सांगे तार माने ही हैज दिस मोर एज इज वाहन से तो ता ऊपर बसी कर सांगे सांगे पड़ेला ब्रह्मांड रो चक्कर मारिया पई गणेश देखिले मु कोन करिवे एज इट इज आई एम फैट ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैव ए माउस सो व्हाट ही डिड वाज ही से ता मां बापा शिव पार्वती रो चक्कर मारी करी बसिला से कहला मो पाई मो ब्रह्मांड इज माय पैरेंट्स. So the analogy that I am trying to make is we have to change the rules of the game if we want to survive. If you play by the rules of mass production, we can never compete. If we will always require welfare measures like subsidies and design intervention, etc., nobody talks about design intervention for Surat people. Nobody talks about design intervention for mass produced Bhiwandi or people do it on their own because it is a sustainable business for them. We have to pump all these extraneous inputs into the handloom sector, primarily because we are otherwise not cost effective. My solution that I have seen over the years, and a very apt example is Chanderi cluster. What is the strength of handloom? The strength of handloom is we can make small customized lots. We can give uniqueness, exclusive production. Who wants exclusive production? A top designer wants exclusive production. He doesn't want large quantity. He wants small quantity, but he wants exclusive so that he can differentiate himself from the rest of the competitors. He charges 3 lakh rupees for a lehenga. 50,000 rupees for a lehenga, which he can manufacture with 7 meters of fabric. He can pay you that 200 rupees or 100 rupees extra for weaving charges if you can give him an exclusive lot. If you look at Chanderi, 10 years back, Chanderi people were, weavers were similar situation that you would find weavers elsewhere in the country. They were not having enough work. Wages per day for the weaver was absolutely low. Lot of youngsters were just leaving the trade. The median age of weaver was 40 plus. So what happened? There was one small intervention by ILO, and designers started working in the cluster. Today, people who had given up work weaving are trying to go back. Youngsters are willing to take up the work because people are able to make 20,000 rupees per month sitting at home because they have been connected to designers. Designers give them smaller lots, but with more exclusive designs, and designer is willing to pay more. I think the way to go is for us to encourage, and I think
Mr. Sanjay Panda also suggested the same thing, is about trying to connect designers, practicing designers with master weavers and weavers who are able to do intricate work, and they will have a very thriving and sustainable business. For other people who are just basic dal roti weavers, who are just weaving, kapda which can be woven much faster and cheaper by handloom, we have to set up a policy that over a period of time, we have to graduate them to other more contemporary vocations. Basically, a weaver has an excellent eye, hand, and leg coordinated movement. Can we teach him stitching? Can we teach him something else, so that instead of him finding it difficult to make ends meet in a cluster, trying to use a technology which is obsolete, he actually then becomes a more productive and regular year of the market. So and this is purely from a livelihood perspective. I am as far as art and craft is concerned, or our traditional dharohar is concerned, or Sanskriti is concerned, I am sure it will go the patola route, when there will be fewer but more master craftsmen who will make a very decent living, and they will be seen as artists, and they will not be seen as industrial workers. So today, even in the West, in USA and in Europe, you have people weaving, but those people are not, industrial workers producing mass production. They are producing tapestries, etc., which they sell for like $5,000, $10,000 per piece. So they are artists. Given that fabric is an industrial product, fabric is an everyday use product, we have to differentiate what can be seen as an art piece and what can be seen as a regular, industrial product. I think that is all that I have to say, and thank you very much. Thank you, Mr. Pandya. Thank you for your thoughts that weavers should be treated as artists and not necessarily weavers who survive on some kind of a loan or support from the government. Thank you so much. Bartaman mo request karibi Sri Ananta Dash जे अनेक दिन धरिक टेक्सटाइल सेक्टर रे काम करछन्ती जे अपेक्षा करछन्ती से तांकर वक्तव्य रखिबे तांको अनुरोध करिवे से टिके संक्षेप रे तांकर मतामत प्रथमे समस्त को नमस्कार जणोजी हेलो सुनि परछन सर यस यस हां समस्त को नमस्कार कोड जातीय हस्ततंत्र दिवस रे मोर समस्त को सुनि साला परे आई हैव कंप्रेहेंसिव टिके कंप्रेहेंसिव एनालिसिस गुटे करिछि बिकॉज़ ऑफ माय बैकग्राउंड बेसिकली आई एम ए टेक्सटाइल इंजीनियर बाय प्रोफेशन. I did my BTech and MTech and served in government and private also. So, sir, the handloom is totally, as you see, it's a total value chain of industry. It starts from cotton, then it goes to yarn, then to fabric, then woven, then dyeing, then printing, then garmenting and all. This keeps on. What we intend to know is you have to analyze the voids and gaps which are felt in these sectors. Like you throw, there is a complete break of value chain in our state. That means cottons are abundant. When there are huge spinning mills, there are no cottons available. When cotton is produced abundant, it is almost 2 lakh quintal. There is no spinning mills available. In absence of yarn, the handloom industry is really lagging because they don't get yarn from out. They have to procure yarns from outside. The same cotton goes outside, gets converted to yarn, and comes back to our state, and which add to their cost. And the type of quality and quantity, there is no measurement system. There is no quality laboratories there. They cannot measure it. Even if there are some organizations like National Handloom Development Corporations and all, they give yarn. Suppose the rate and the quality is not as far as the expectation of the weaver cannot go and complain. And there is no remedial measures for it. We do not have any kind of checking systems. So that is the biggest drawback in these sectors. Further, no matter the designs are very good, and can you tell me, all these panelists also, I need to ask, I have a doubt, why the handloom is restricted to cotton and silk for last 100 years? When there is a turnaround of the yarn engineering, there are so many fibers which have come into the market, and we are restricted to
only cotton and silk, cotton and silk, cotton and silk. There are bamboo fibers which have come. There are lycra. There are tencel. There are so many other man-made fibers. We have never thought of handloom being produced by this kind of fiber or yarns. Neither from government side, not from any technocrat side, not from any, entrepreneur side, they have never thought of producing multi-variety of yarn. And no matter what our Mr. Khitis sir has told, it's right. We cannot produce, you should not produce any product which is being owned by power looms. But I want to say a few words here. See, a handloom weaver enjoys all his family hoods. He enjoys natural environment in his village. After that, he weaves. Maybe a power loom weaver gets 400 to 500 to 600 rupees a day. But that is his whole and sole professions for working for 8 to 10 hours. Where a handloom weaver, although produces the same fabric, gets 200 rupees in addition to his own professions like agriculture and all. That is not his main profession. So weaver needs to be segregated in that way. Who are marginalized weaver, who are weavers by professions total, like Bargad, Sonpur, we are seeing there by profession, they don't have that kind of thing. So this has to be analyzed and market segment has to be determined. Then second thing, dyeing is I feel in the value chain, dyeing is really lagging. There is no centralized dyeing units here. There is no centralized dyeing units to control the dyeing. There is no dyeing unit. So the state really lacks in some entrepreneur comes forward with a centralized dyeing unit somewhere in Bargad or some Sonpur or even if in Cuttack, small dyeing units with all quality adherence. I think many such entrepreneurs who can promote with right kind of project proposals, small project proposals, so that dyeing gets a real, we can bring a turnaround in the sectors. This is also, and printing also. We have got some hooking in the brain. The handloom should not be printed. Handloom fabric should not be printed. We should be emotionally intelligent. We should be we should act smart on these handlooms. The plain handloom fabrics can also be printed and converted to any kind of materials. Let it be along with the tie dyes also. Let the pallu be tie dyes, let the body be printed. There is no harm. And people have a mindset, no, printing is very bad for handlooms. Why printing is bad? You go to Rajasthan, you go to Ahmedabad, there are so many printing on handlooms. That sector is really lagging. That is the area where we can also promote some good entrepreneurs to come forward for printing. These are only two major aspects, dyeing and printing, where we can also intervene to ensure some good entrepreneurs, and we can see, OCF can see some visibility, tangibility, visual effect on the field in creating entrepreneur. It is not that we are very passionate, emotional about handlooms. These designs are there, those designs are there, NIFT can be associated. These are also all good things, but this will not bring a very tangible effect in the field. We have to see some visibility in the field, right? At the with all adversities, whatever is present at present conditions of the government. Do you know, suppose I am an entrepreneur, I walked into Director of Textiles, I want to start 20 handlooms in and around Bhubaneswar, but state capital is a very catchy center. For any kind of intellectual mass or customers to go and visit, see what handloom is. Who are there to support me? There is no policies. There is absolutely no policy measures, even if that policy doesn't work. There is no such provisions. 20% rebate on machineries or 40% rebate on machineries. If you put up handlooms, we'll give this kind of rebate. If you put a raw metal, this kind of rebate is there. If you go for designer, the designer costs will be reimbursed by us. Where is that entrepreneur? Real entrepreneur? We are always addressing to the issues of the cooperative society who are in the centralized fold. And by administrating them, the sector, we don't expect the sector to grow. And third point, sir, I want to mention, there are diploma, there are degrees. There are so many good artisans who have been working for last 10, 15 years. Where is the certifications? Who recognize them? Is there in ITI? There are so many trades. There are so many ITI, electrician ITI, plumbing ITI, carpentry ITI. There are so many ITIs, full ITIs. Who will certify them? Who will honor them? We are now saying so many weavers will come into professions, will bring these entrepreneurs into profession. Why the entrepreneurs will come? Why the young mass will come? Unless and they have a honor or degree or some kind of certificate in their hand. They don't have a certificate. Weaving is a profession which is being continuing for last 100 years. Diploma is different, sir. Degree is different. They are theoretical.
The people, the artisans who work on the field, they can teach us about design, about weaving. They don't have a certification. They don't have any recognitions in our state. This is also point one which needs to be addressed. I have addressed it to Ministry of Textiles long back, but they didn't. Somehow or other it didn't work out. You put them an ITI course. If electrician can be given ITI certification where he can avail loans, he can go with the pride in the society. I'm a qualified man. Handloom qualifications क्या diploma एक, there are only one colleges, diploma 20 students निकल गए तो हो गया sir. This is not practicable, sir. These are all the things needs to be addressed. And second thing, we have to act. We should not be hooked to this kind of particular designs. Tie dye, हाथी घोड़ा बना लो, घोड़ा को हाथी कर लो, वो design बना लो, color combination change कर दो. इसमें we should not keep our mind set to this particular directions. Fabric is at such a huge segment. Handloom is a part to it. We can interface, impose everything on handlooms. Let it be printing, let it be embroidery, let it be plain fabrics, let it be combined fabrics. Let you take the designs of Patola designs, put it on our Odisha fabrics. Let our Odisha bandhavas be there. Let the Patola designs be there. There will be a product mix match. We can also put the Andhra particular designs. If our weavers who are there, who can drive a truck, they can drive a car also. Somebody who knows how to drive a Mercedes, he can also drive a Fortuner car. There is no problems in engineering of designs. Let we copy designs. What's wrong in it, sir? If some designs are moving fast in the market, let it be in Andhra, Tamil Nadu, there are so many designs. We must see what techniques they are adopting. Let us adopt these techniques also. Like you go to Kerala, they put zaris. That is very famous. White with zaris. Those things are famous. Our handloom weavers cannot produce this. And wherever you go, you find the same ikat, and we are mad about that ikat. And ikat mein that mindset ho gaya. We have to change. Simply, we have to mix match. Let us mix bamboo yarn with cottons, produce. Give a sample, give a particular effect. Do you know, sir, bamboo yarn is antimicrobial. It is better than cotton. Water absorbency is better than cotton. Comfort is better than cotton. So you can think of procuring bamboo yarns and mix with cotton. One bamboo, one cotton, one bamboo, one cotton yarn, and you can weave a fabric, and new fabric will evolve. Unless and until the engineering aspects are rightly Bhargav told. The engineering aspects of the yarn engineering and the fabric engineering design aspects, even design aspects are not being taken care of, not being looked into. The sectors, no matter, it will not grow. आगुरु कुंभार थिले चंभार थिले दे लोप पाई गेलानी आस्ते 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 लोप पाई गेलानी तंती भी लोप पाई जिवे ओवर द पीरियड टाइम दे लोप पाई जिवे धीरे धीरे गोटे सेगमेंट पर्टिकुलर पैच सेगमेंट्स दे विल कैटर द हाई प्रोडक्ट्स but you want to commercialize, you have to think it very smart, very open minded. You have to think. We should not be passionate about one direction only. And second thing, product mix match is very important. Product mix match is very important. We can promote, see that let him install 20 looms in and around Bhubaneswar. We'll put them all technical guidance. These are all the fabrics you need to be woven. Fabrics should be defined. These are all the fabrics you need to weave, and market we are seeing. And we'll serve for the market. There is a huge market for bamboo fabrics. Huge market. There are huge market for bamboo and silk combined fabric. But weavers are not exposed to any kind of yarns apart from cotton and silk. So technology interventions or design intervention in terms of fabric or engineering aspect of fabric needs to be seen. It has to be re-augmented in the particular directions. Third things are if yarn is not available. What should be the solution? For last 10 years, we have never thought of, no government has thought of, no private entrepreneurs have thought of, why should we get yarns from outside, where our cotton goes and gets converted to yarn, comes back to our state. Like iron ore goes back, it comes back as a steel to our state. Why, sir? Achha, suppose there is for setting up a spinning mill, it's a very capital intensive, and government cannot run. Also, government should not run also. So it's a capital intensive industry. You need to have the spend, at least the minimum is 30 crores to start with. The minimum 8,000 spindles. Suppose you forget that. We can see, sir, you go to Banaras, you go to Gundel, Ahmedabad, you see lakhs and lakhs of solar charkhas continuing. They're producing yarns and supplying to Raymonds. Such a high, fine quality yarns they're producing by hand. And we have never thought of solar charkha or plain charkha. This is improvised charkha, the improvised technology available. And in Banaras, those areas, I have gone in Bihar, Navada areas, they're full of charkhas.
You go to Ahmedabad, you can, Mr. Bhargav can add to my point, or Mr. Hitesh can add to my point. They are supplying the yarns which are being produced, which cannot be produced by a spinning mill also. They're so fine. Even the technology of muslin fabrics, which are there long, 500 years back, we feel, sir, it was not there. It was not there. It was there. How they're weaving, how they're spinning such a fine yarn. That is because these are all the charkhas. So charkhas, there are so many implements which will be created. So many implements which will be created. At least I guarantee, sir, there will be 10,000 implements created at a stretch, at instant. Do you know, sir, what is the total consumption of yarns at present? It is more than 150 to 200 crores of yarn, because total production of handlooms and powerlooms all taken together, it is more than 400 crores, both centralized, decentralized powerloom. Powerloom itself contributes more than 70 to 80 crores of fabric production, sir. So nobody assesses this kind of things, voids and gaps which are felt in these sectors. Nobody assesses. Neither government has the time to assess, because we are mostly engaged ourselves in welfare schemes. Welfare badao. Welfare badao. It is not director of textiles, it is director of handloom welfare badao. The technical directorate or any kind of this OCF should address this kind of issues, sir. Only will address this issue. There are so many technical empowerment or manpower available who can add on to us. There are many passionate people inside us. You can do wonders for this. Thank you, Mr. Das. These are all the things. Anyway, sir, thank you so much for giving an opportunity to speak something about textiles and handlooms. Thank you. I think I have contributed some amount of things. Thank you so much for your very unorthodox views, and you have come out with some excellent ideas as to how we can think differently, think out of the box, and we value your comments. Thank you so much. Thank you, sir. Patnaik sir, if you allow, can I make a point? Vikas Bhargava here. If you could be brief, please. Yes, Mr. Bhargav. Hello. Is not in any power loom or airjet fabric, and there are many more qualities apart with other than your which is very accepted in Europe and America, that is low carbon footprints. So these things make handloom fabric advantage on power loom or airjet fabric. That's my submission, sir. Thank you so much for your good, Mr. Bhargav, for your valuable points, technical points. Thank you. Thank you. Now, do we have with us Bartman Srijukta Sarath Patra achanti ki? Srijukta Sarath Patra ke jane handloom ro national award paichanti. Srijukta Sarath Patra aji achanti ki am ghon re? Is he there? Is Mr. Sarath Patra available? All right. I don't think he's available. Sarath Patra. अच्छा पाइसे जन आहंती श्रीयुक्त रामकृष्ण मेहर अछंती की श्रीयुक्त रामकृष्ण मेहर अछंती की रामकृष्ण सर टिके अनम्यूट करंतु रामकृष्ण बाबू अछंती की सर नमस्कार समस्त। अच्छा श्रीयुक्त मेहर जने नेशनल अवार्ड विनर से कलाकार जने एवं तांको स्वागत करछि। रामकृष्ण बाबू आपण आपनकर वक्तव्य काइंडली रखंतु। सर सर हेलो कौन तो मेहर बाबू हेलो किसी समय पूर्व मेहर विधान हमर सब विभिन्न विषय रे वक्तव्य प्रदान कले पंडा सर आमर पाणिग्राही सर संगे हम इटा आसुछि कि मुंडा कहूछि देन सुखनी गजेंद्र बाबू ये भी भल वक्तव्य प्रदान कले विकास भार्गव भी
तो मु केतरा जिनस जोटा माने केही कहि नांती तारि विषय रे मु केतरा जिनस उपस्थापन करिवा लागि चाहूची। मुख्य जिनस हला जे आम हैंडलूम सेक्टर रे आज पर्यंत यार स्थिति जहाँ थिला माने यार संख्या रे जति थिला आज काहे कमी जायछि होय तो यह पश्चिम ओडिशा रे माने विशेष करी बरगढ़ और सोनपुर जिल्ला रे यार जो स्थिति रही थिला यार मात्रा खूब कम कमी किंतु केतेटा जिला रही जोटा कि बारिपदा केउझर कलाहांडी खोर्धा नयगढ़ एपरिक पूर्व ओडिशा रे अनेक जगह रे बालेश्वर भद्रक जाजपुर जिल्ला रे मध्य बुणाकार संख्या कमी जायछि। यार मुख्य कारण है सर आज हस्ततंत्र दिवस रे एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रही जे बुणाकार कहीं काम धंदा छाड़ी दौर निश्चित भाव में या पूर्व किसी वक्ता कहते जो रेमुनरेशन ठीक भाव पाऊना पंडा सार भी किसी कहले आमर विकास गौरव सर भी से भी कहले या भितर गजेंद्र साहू आज्ञा भी कहले से भी सोनपुर अंचल लोक आ मु भी सोनपुर अंचल लोक बरगढ़ रे तो यार मुख्य कारण जे जो बुणाकार माने भल काम करछन्ती आर्टिस्ट ए बुणाकार माने भल दुई पैसा रोजगार करछन्ती किंतु समस्त बुणाकार ए कैटेगरी रे आसुना बहुत बुणाकार अनस्किल्ड अछन्ती आ लेस स्किल्ड अछन्ती। आ गोटे कथा सरकार तरफ रु जे एटा मु जानि आछि मु चाकरी थिली ओडिशा सरकार सेठी मु 26 वर्ष चाकरी कली तापरे चाकरी छाड़ी करी निजर गोटे उद्योग आरंभ करिछि क्वालिटी जिनस उपरे केही ध्यान दो नांती जोटा कि क्वालिटी गोटे मुख्य प्रसंग गोटे विदेश रे जो जिनस एक्सपोर्ट हो विदेश को जो जिनस एक्सपोर्ट होती एवं विदेशी जो जिनस आमठु इंपोर्ट करिया चाहउचंती हमर डिजाइन को पसंद करूचंती हमर कला को पसंद करूचंती किंतु से जदी कहउचंती जे हमको ए क्वालिटी जिनस दरकार हम से क्वालिटी को देई पारुन। द्वितीय कथा हला जे क्वांटिटी माने जेमती अति कम रे भी जदी हमको 3000 मीटर रे भी जदी प्रोडक्शन करबा को पडुची त हमें समान कलर रो समान डिजाइन रो 3000 मीटर प्रोडक्शन गोटे पर्टिकुलर टाइम इंटरवल रे हमें देई पारुन सेटा हमरो एक बड़ समस्या है कि रही हैंडलूम रे कोन होची जे गोटे बुणाकार तार परिवार समस्त मिसिकरी गोटे जिनिस तयारी किंतु हमरो मास प्रोडक्शन पई कोनसी प्रकार सुविधा नाही एंटरप्रेन्योर को डेवलप करिवार कोनसी प्रकार सुविधा नाही जेते बेले 2015 रे प्रधानमंत्री इंडिया हैंडलूम ब्रांड नाम रे गोटे ब्रांड सृष्टि कले हैंडलूम एंटरप्रेन्योर मानको पई तो ओडिशा तरफ मते प्रथम रे मिलितला आ संजय पंडा सर को मोर नमस्कार बहुत बहुत जे से दिल्ली रे थरे तंग संगे भेट होइतिला से मते ए विषय रे बहुत जिंस बुझैतिले आ मु दिल्ली जाइतिली इंडिया हैंडलूम ब्रांड भी मु पाइतिली तो गोटे जिंस वाला आमे गुणाकार को देखुछु किंतु एंटरप्रेन्योर को देखुना आज जो युवपीढ़ी आसी सर युवपीढ़ी माने जो माने भल पाठ पढ़ुचंती माने टिके मॉडर्न ट्रेंड को आछंती से माने बुणा बुणी करबा पई चाहुना समस्त जे बुणा काम करिवे एटा भी किछि माने एमती भी किछि माने नाही बहुत लोक अछंती जो माने डिजाइनिंग क्षेत्र रे काम करि परिबे बहुत लोक अछंती जो माने हमर कपड़ा को नेकरी फैशन लाइन रे काम करि परिबे बहुत लोक अछंती जो माने याकू विभिन्न प्रकार जेमती किछि जन भाई कहले जे अन्य कमोडिटीज जोटा कि हला राखी दिवाली रे विभिन्न सजैवा जिंस एवं अन्यान्य हम पर्वपर्वाणी रही जेमिति जोता हला हैंडबैग हला हमरो मनी पर्स हला मोबाइल बैग हला एमती अनेक गुडे जिंस रही जोटा कि हमरो हैंडलूम रे तयारी करा जाय पारिबो ता पई के आगबर होना हमरो पानीपत्र हैंडलूम किछि बाहर को एक्सपोर्ट होची तमिलनाडु रो किछि जिंस बाहर को एक्सपोर्ट होची किंतु ओडिशा क्षेत्र रे ओडिशा हैंडलूम एक्सपोर्ट हेई पारु नाही तार मुख्य जिंस हला
जे आमे अधिका परिमाण रे गोटे डिजाइन्स को करि पारु ना गोटे कलर रे आमे ताकू करवाटा संभव हे पारु नाही हमर पाखरे बल्क डाइंग करिवार सुजोग नाही ना सरकार तरफ अच्छी ना प्राइवेटली कौन बुणाकार यहाँ कर मुख्य जिनस है सर जे एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट करिवार आम पाखे कौन प्रकार स्कोप नहीं जेमिति कि अन्य प्रोफेशन रे सीमेंट व्यवसाय है मेडिसिन व्यवसाय है अन्य व्यवसाय रे लोक समय देवाई चाहते काम करने चाहते आठ भल भी लाभान्वित होती किंतु आम बिजनेस रे लोक हैंडलूम क्षेत्र को बहुत कम लोक आस तो बुणाकार माने जो माने ग्रासरूट लेवल काम करते सरकार आज पर्यंत बहुत गुड़े ट्रेनिंग देती मो डिपार्टमेंट थी तो से मु भी बहुत ट्रेनिंग करें सरकार तरफ आउ से ट्रेनिंग गुड़ाक जहाँ भी दिखाई केवल सेटा ट्रेनिंग ट्रेनिंग माने किसी स्टाइपेंड पाइबा लक्ष्य से आसुंती आउ ट्रेनिंग सरला पर से घर को पड़े गले जहाँ भी शिखिले सेटा को कार्यकारी कले ना तो एटा को केमिति पॉजिटिव सेंस रे काम करा जाय परिवो जे बुणाकार को गोटे डाइंग ट्रेनिंग दिया गला तो डाइंग ट्रेनिंग भी आमे जो डायर भी आणुथलु माने जे ट्रेनिंग मास्टर जो अणा होतला से माने भी जने जने डायर थिले से माने केवल किछिटा जिंस सिखौतिले तो हमको हाई लेवल डायर जो ट्रेनिंग मास्टर अछंती से भलिया लोक को आनिया पड़िबो डिजाइनर्स जो माने एनआईडी रो हेले कि निफ्ट रो हेले किबा अन्य लाइन रे जो माने डिजाइनर्स अछंती आमे हमको से भलिया डिजाइनर्स आनिया को पड़िबो काहे कि हमर जो कपड़ा तयारी होची से संबलपुरी साड़ी रे हो किबा मानियाबंदी साड़ी रे हो किबा हवसपुरी साड़ी हो अ गोटे खुशीर कथा जे हम ओडिसा रे जो हस्ततंत्र तयारी होची से सब गुडाक जीआई मान्यता पाई सारी किंतु दुखर कथा जे आमे से सब जिंस रो जो डिजाइन्स पॉइंट रही से डिजाइन्स आमे आज भी करूँ यूरोप रे जो डिजाइन्स गोटे आज पसंद करचंती से डिजाइन्स आम ओडिसा रे नाही एपरकि यूरोप कथा भी छाड़ी दबा आम भारत रे भी अन्य क्षेत्र रे जो डिजाइन्स तयारी होची आज हमर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रे केते प्रकार डिजाइन्स होची आमे जदि चिंता करबा जदि वेहिकल कथा चिंता करबा जो आमे 30-40 वर्ष पर जो एम्बासेडर कार को देखुतिले एवं जीप भलिया गोटे गाड़ी को देखुतिले चार चक्किया गाड़ी आज भेराइटी ऑफ तमने कार बाहरलानी भेराइटी ऑफ डिजाइन्स बाहरलानी किंतु हमर हस्ततंत्र क्षेत्र रे सही केतेटा पर्टिकुलर मोटिव 30-40 टा मोटिव को नै करी ही हमर काम चली तो हमको जो कलर स्कीम आउ डिजाइन्स ए दुईटा रे संपूर्ण रूप चेंजेस आनिया पड़िबो ता सहित एथिरे केवल केवल बुणाकार परिवार जो माने हेरिडिटरी हिसाब रे काम करचंती केवल सेही माने कले करिवे जे या नुहे अन्य अन्य सेक्टर रो माने जो माने आईआईएसटी रे डिप्लोमा करचंती किबा इंजीनियरिंग करचंती किबा अन्य जनरल पाठ पढुचंती बीए बीकॉम करचंती सेही लोक माने मते जदि ए सेक्टर को आसी काम करिवे तांको मते किछि जदि ट्रेनिंग दिया जे परिवो तो से माने मते एथिरे डिजाइनिंग रे कलर स्कीम रे ता सहित एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करिवार भी जदि आमे ट्रेनिंग दे परिबा निश्चित भाव रे हमर ओडिशा हैंडलूम टा तो विकास ही परिबो आउ जेमती आमे बाहरु ऑर्डर पाई परिबा धरंतु गोटे देशरु हमको 50,000 मीटर रो गोटे ऑर्डर आसिला तो आमे ताकू कंप्लाई करि पारु ना इवन बड़ बड़ एंटरप्रेन्योर मध्ये करि पारु नाही बयनिका वस्त्रालय बड़ी बड़ी बड़ बड़ ऑर्गेनाइजेशन भी ताकू कंप्लाई करि पारु नाही एवं ठीक समय रे मध्ये दे पारु नाही किंतु एटा जे असंभव एक कथा नुहे आमे समस्ते आज गोटे भल प्लेटफॉर्म रे बसिचु भल जिंस चिंता करूचु बुणाकार मानको पई चिंता करिवार गोटे समय आसी आज जातीय हस्ततंत्र दिवस रे आमे केवल गोटे मेसेज दे देले किबा बसिकरी डिस्कशन कर देले यार समाधान हे जिवो एया नुहे आगो को जे सरकार सब दिन पई सहायता करतबे एया भी भाबिया कथा न काहे कि जे जेंती गोटे छुआ जन्म हला परे ताकू 20 कि 25 वर्ष पर्यंत माँ बापा ताकू तार प्रतिपोषण करती जे ताकू जीवन भर जे प्रतिपोषण करिवे एटा तो किछि माने नाही तो सेही परि हैंडलूम सेक्टर
हेई पारे जे एटा बुणाकार जहाँ रोजगार करुची ता पई ठीक हेई पारुने परिवार चलैया पे कष्टकर हो तो यार अलगा किसी संधान करने को पड़ो जे कौन कले गोटे बुणाकार जो 6,000 रु 8,000 रोजगार कर 20,000 कि 30,000 कि 40,000 पर्यंत रोजगार कर कौन कले जड़े डिजाइनर यही क्षेत्र में कम कर मासक 80,000 टका रोजगार कर कौन कले जड़े फैशन लाइन तो आसिक केवल चाकरी अन्वेषण न जाइक आम ए लाइन रे काम करी तो से गोटे फैशन लाइन रे विभिन्न प्रकार डिजाइन करी निजर गोटे ब्रांड क्रिएट करी ए जिनस को लेकिन से केमी लक्ष लक्ष टका रोजगार कर तो ए निश्चित भाव में केवल बुणाकार नुहति फैशन लाइन रू भी डिजाइन लाइन रू भी भल डाइंग मास्टर भी दरकार ये सब क्षेत्र लोक आणिक जदि आम कम करवा गोटे पॉजिटिव सेंस रे जदि या विचार करवा तो निश्चित भाव में ओडिशा हैंडलूम रो डेवलप हम आउ यार मास प्रोडक्शन केमती हो पार प्रोडक्टिविटी केमती बढ़ी पार मु देखुची मुझे छोट थी आम साई काम होता तो मुझे जाकि बुणाबुणी करूँ किंतु पर पर मु आईआईएसटी बनारस से पढ़ी आउ चाकरी भी कली मु देखुची जे से 40 वर्ष तले जो तंत्र थिला आज भी सार से तंत्र अच्छी किछिटा सामान्य परिवर्तन होती तंत्र माने गठन रे किंतु आम ओडिशा रे ना टेकअप मोशन यूटिलाइज होची ना लैपटॉप मोशन होची ना प्रिंटिंग रो सुविधा अच्छी ना कैलेंडरिंग रो सुविधा अच्छी ना वैल्यू एडेड रो सुविधा अच्छी गोटे साड़ी तैयारी हैला जहाँ बुणाकार साड़ी आनला आम डायरेक्ट ताकू कस्टमर को बिकुଛୁ कि गोटे दुकान को लेकिन से बिकला सेटा बिक्री होची साड़ी रे आम वैल्यू एड भी करि परिबा मो देखुची कोनोसी भी ओडिशा रे कोनोसी भी प्राइवेट संस्था किंबा सरकारी संस्था गोटे साड़ी रो पैकिंग भी भलो करी करू ना जोटा कि मु वर्तमान आपन को देखेबी गोटे आमे जते भी साड़ी बिकुछु तार गोटे भलो पैकिंग करूछु आ पैकिंग करी दउछु तो जस्ट टिके मते यदि 15 सेकंड समय देबे मु आपन को देखै परिबी ये गोटे सर आम पैकिंग करके दौचु शाढ़ी प्रत्येक जिनस आमर हैंडलूम ब्रांड अच्छी हैंडलूम मार्क अच्छी एमती एंटरप्रेन्योर माने कहीं करूना तो ये जिनस आम आम जिनसटा को बाहर परिचय सृष्टि करने लगे ये सब दरकार मास प्रोडक्शन दरकार बुणाकार सहित अदर कैटेगोरी लोक मान ए लाइन रे ए लाइन को आनिकी ट्रेनिंग देकरी ए विषय माने शिक्षा देकरी से माने केमिति याकू बिजनेस टाइप रो काम करिवे तार भी शिक्षा देवा दरकार केवल जे बुणाकार बन तो ए सब जिनसर आवश्यकता रही सर आज जो समय भी तेणु केतबेले गोटे भलो अन्य निश्चित भाव कहबी तो जो माने एठी पार्टिसिपेट करचंती समस्त निश्चित भाव शुणुवे आ मते पंडा सर आ पटनायक सर मते सुजोग देथिबारु मो निश्चित भाव समस्त धन्यवाद देवी ता सहित आज हस्ततंत्र दिवस रे मो मोर समस्त बुणाकार भाई मानकू अभिनंदन जणाइबा सहित एठे उपस्थित थिबा समस्त को मोर नमस्कार एवं अभिनंदन बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सर डिस्कनेक्ट हो गला बोधे हाँ आ गोटे जिन मुझे कहवाई चाहिए जे संतोष महापात्र सर मो पाक आसते
मते गोटे डिजाइन देथिले बोधे सेटा को तांकर विदेश को पठेबार थिला तो तांको डिजाइन टाइम में मु काम करथिली 9 वर्ष तक सेटा मु करके तांको देथिली या भी मु तार सौभाग्य प्राप्त करछि आ महापात्र साहब आपको भी मते बहुत बहुत नमस्कार श्रीकांत विजय बाबू कौन कटि जाइछन्ति कि पटनायक सर देखुछि हाँ विजय सर कटि जाइछन्ति सर कटि जाइछन्ति आउ विजय सर व्हेन वी वेट फॉर हिम आउ के कौन कहबे को चाहंती कि on this occasion anybody wants to speak briefly yeah just can I say something actually I'm Gajendra from Delhi yeah Gajendra babu kontu yeah but make it brief please because बहुत time हे गेलानी just good just art भाबरे कहबी एटा ए पछरे जोटा मोर गोटे एटा art देखु एटा गोटे जो आर्ट अच्छी मो पछरे जेटा एटा अछि ये आर्ट भाबरे खाली कहबा मैं चाहू छी एटा एटा हमर पद्मश्री डॉक्टर चतुर्भुज मेहर सोनपुर रु सेटा तयारी करचंती एटा हम समस्ते कोजु खाली हमें साड़ी हैला या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कथा को जो माने गोटे बांध कलाटा हैंडलूम टा जो बांध कला अछि सेटा गोटे साहित्य भी सितरे लिखा जे पाते अपन मोर कथा सुनि परछंती पते यस 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 तो एटा पूरे बंध कलर गोटे आर्ट भी अछि एटा कि वृक्ष बंध कहंती एटा वृक्ष बंध एटा गोटे कविता लगाई छै आपण देखिबे ए मो पाखरे अछि कविता तार लेखा हिची जदी देखि पारथिबे ओडिया रे भी लेखा अछि ए सेट रो आरंभ कले ए सेट हमरे ऊपर पर्यंत आपण एटा पढि पारिबे एटा खरियार महाराज ब्रजराज सिंह दोकर रचित एटा गोटे कविता आ ताकू माने हाथ रे बुनी करी हस्तकला रे बुनी करी करचंती हमर पद्मश्री डॉक्टर चतुर्भुज मेहर एटा करचंती खाली सेटा गोटे कहबार था आर्ट रे हम जो जेते भी कलाकार माने अछंती हमर ओडिसा रो तमाने पृथ्वी प्रसिद्ध तापरे भी से जिनिस गुडा को हमें पृथ्वी रे बोधे कहीं ना कहीं हिसाब रे हमें रिप्रेजेंट करि पारुनो सेटा गोटे हम कमी गैप रहउची या सरकार रो नीति हो चाहे माने को भी हिसाब रे सेटा आ गुटे विश्व बाजार अछि मु सेटा भी कहली सेटा खाली जस्ट कोजी थैंक यू वेरी मच मते अपन टाइम देइथारो जस्ट धन्यवाद थैंक यू गजेंद्र बाबू I think I have a question. I am Dr. Tribhuvan Mohan Mahapatra, BHU, sir Varanasi. sir One thing is that I have 3-4 points. One is what about the consumers' awareness and motivation of the consumers? Second thing is that what about the marketing strategy of this product? And what about the turnaround time of finished product? And the production cost of the handloom products and how to compete with the international market? And what should be the aggressive marketing strategies? Because other countries are selling in a much cheaper price. India's, because I travel and must have seen 2/3 of the world, they are gote corner podithibo Indian product, nobody buys it. So consumer has to be made aware, and there should be proper advertisements, motivation of the consumers inside the country, and about all.
And another thing, is it only confined to Odisha or all over India? Yeah, these are all relevant questions because there are so many gaps in the entire value chain. And the biggest weakness is capacity building in all these areas. Yes. We have been very small players. Our weavers are a very, very small, economical, poor country. Pure. There has been no effort to capacity building in any of the areas that has been highlighted. So we have to work on all these areas to actually create a vibrant kind of industrial scenario. We have to And go we a should long take way. it as an industry, not as a poor people who should be given doles occasionally by government when they feel that they are not having enough income, and then they forget after 6 months. So that is what I think some of the people are hinting, that we are taking it as a social issue, not as an economic issue. So there is a big difference in our outlooks toward this sector. It's a long way ahead. And the chain, there are so many gaps. I mean, you take anything, it is lacking. You tell me anything, any point in the value chain of handloom, which is strong in Odisha, except that it is a traditional design, which has a ready mass base, which has been used by all Oriya women and men over centuries. There is nothing else which is good about this sector right now. So I think everybody has to work unitedly in whichever capacity they have expertise in to help this sector in a united manner under some banner, some leadership, which we request to come forward to work in various segments of this value chain. Thank you. So that is what I can I can summarize this. Where is Pandavu? Pandavu has left. He has some other engagement. Work, so he has engagement. He has left now. But he gave his valuable inputs. A lot of people have given a lot of valuable inputs. Everything is correct. But if you put together everything, we lack in every sector, every segment of this sector. Who is working on that? Where is that united command which will work in each segment of this sector? Either it has to be a government-led initiative, or it has to be a private collective-led initiative. So I think we should think about it. So I want to speak something, sir. Yeah, please. That I advise this my submission to OCF. We can talk so many things about policy matters, but somebody has to build the cat. To see the exact effect on the field, we can talk later on the webinar. When it goes out, we will come and practically do things. My submission and suggestion is, let us formulate some kind of, let us analyze the voids and gaps, formulate a customized project report, small project reports, ready-made with OCF. Any kind of entrepreneur which comes in intervenes, let it be designing of the looms, engineering aspect of the looms, product aspects, let it be a charkha project, let it be a project. I get your point. I'll just since we are running short of time, I'll just give you some update what action OCF has done. As you know, OCF is not even 1 year old, but we have been fortunate enough to connect to so many Orias who are willing to do something good for the society and Odisha economy. Basically, our motto is economic development. We are not into social sector right now. But let me give you, we have taken one initiative to develop a handloom sector in Balangir, for which a project report has already been prepared and vetted. If you, I think we can give you that copy of that project report, which is on the verge of being submitted to authorities, and we are going to connect about 300 to 500 artisans near Patnagarh area for the ethnic wear that they are making. So this action has already been taken by OCF, and in this we are being helped by few people. One among them is Sumita Sahu from Finland, who is based in Finland. She has given a lot of input. She belongs to Bargad area. So we are working already on that, and we will certainly take your help
as our expert to work in other areas also. Right. Right, sir. Very right. There are so many, like I cited. You touch any area, it is lacking in this sector. It is lacking. So that small entrepreneurs can be developed. You can see at least 5,000 employments or entrepreneur, whatever, Correct. are being created. Either Yeah, through this gives maximum. Maximum population is touched by this economic activity. Right. Gare gare Right. achanti artisans. Artists. How about the political emphasis printing, dyeing, production of yarn, which will be an input to handloom sectors, and there is a ready-made market. There is absolutely no problem for getting market because market is assured. So only problem while starting any kind of industry or setup, only front-end link is a big problem, right? Where to create market is in handlooms, it is in powerlooms, everywhere. When you have to choose some kind of activities where there is a assured market. And people will come to you identified this area even in the last or even. Okay, yes. Okay, can you sir, request that you make a small concept paper on this so that we can give it to the people? I'll prepare a project report and submit it to. No issue, sir. I'll prepare a ready-made project report which is bankable, which is cost-effective, which anybody can come and intervene, and so that project gets successful. There are so many aids and concession and benefits which we can traffic to different departments of the government also. And I mean, OCP is not going to do. Somebody who can. So we'll locate or identify some entrepreneur who is willing to do this in this right, area. Sir, right, sir. Very right, sir. Very right, sir. So these are. There's so many opportunities now. See, not only handloom, and there's so many opportunities in every sector. It's full of opportunities. Yes. Anyway, sir, let us see at least some visibility in the field maybe coming year. At least this handloom sector cluster which we are applying to government for recognition. I think we hope to see that in next 6 months time in Balangir area, Patnagarh area. Yeah. Very right, sir. Very right, sir. Thank you so much, sir, for your tangible effort which you have OCF has given. I definitely love to add on this to your activities, everything, wherever I can. Thank you so much, sir. One thing I wanted to ask, I'm Professor Tribhuvan Mohan Mahapatra, distinguished professor. What about the political will of Odisha government in promoting this? Without that, it is difficult. Am I audible, sir? Hello. Yes, you are, sir. We cannot comment on that. Some government officer has to, or the political bosses has to comment. But I believe in one thing, sir. I believe that individually all politicians have good things at heart, but that collective effort is missing, and the vision is missing. Vision. Yes, lack of vision. That's why lack of vision, understanding. Only good intention is not good enough. No. You have a vision and the action plan to implement. So that's what is missing in Odisha. Yes. Not only in this sector, in many sectors. In many sectors. Even tourism, you see, Odisha has everything for a tourism. Sir, Samuka project, whether you have heard or not, it has taken 25 years. It's still not approved, which is a project being planned near Puri Satpada, on the road to Satpada, and 2,000 acre tourism and travel park. It has been in concept stage for 25 years. So let us not talk about that. Let us not talk about that. Yeah. We'll come to the issue. I think, sir, one thing I would like to say, government should at least hungry to do something, and in a very constructive way to make a sustainable market opportunity for the weaver. Just by taking the expert opinion, like engineers, different type of engineers, fashion designer, and so far as the global market, अरे को देखि करी जदी सेमाने गुटे नेबे हंग्री हेबार कथा तागोर भूख हेबार कथा जे आम लोक गुडा को जो बाहर देश को बाहर राज्य को जो होतନ୍ତି सेमाने से ऊपर सेमाने ताकर माने भूख क्रिएट हेबार कथा दे शुड बी हंग्री देन ओनली दे कैन डू. Thank you, sir. Who will be hungry, sir?
government should show their willingness. Loka mananku they should at least कहले Mr. AP Das कहउतिले बाकी आओ जो Mr. Bhargav कहउतिले जे से माने बाहर लोक they are interested to do something for the Odisha. The only problem is that how they will come, that initiative government should take. What is the challenges they should take? I already said that there is a global opportunity. I'm not talking about the Sari and about the Odisha scenario or national scenario. I'm talking about the global scenario. Actually, you can create a market. What is the problem? Why we are always talking कि already धीरे धीरे ओवर्स गुड़ा को कमी जाउछंती ए सब करछंती कोन ए सब गुड़ा there should be some policy हेबा कथा माने तापरे मार्केट ही हेबो they can sell their product कोन पई माने सस्ता रे कोन पई बिकिबे आर्ट गुटे एमती जिनिस पृथ्वी रे आर्ट रो किछि केतेबेले वैल्यू न थाए हां हमें ताकू सस्ता कोन पई करबा बाजार अछि हाई क्लास रो लोक किनिबार देयर आर सेगमेंट आई एम ऑलरेडी वर्किंग विथ डिफरेंट ब्रांड ताको भी गुटे सेगमेंट अछि गुटे मीडियम सेगमेंट अछि गुटे हाई क्लास सेगमेंट अछि से पूरी सेगमेंट रो आर्ट रो भी अछि आर्ट भी हमें बिकी परबा बाकी से बाजार खोजिए पड़िबो हमें एक्सपर्ट ओपिनियन नेबा को पड़िबो जदि हेबो देन No, all these things are correct, sir. This has already been highlighted, Rajendra Babu. So this is all noted. Yes, you are correct. You are absolutely correct. Any other any sort, because we are running out of time. Can we close this thing, or anybody wants to say something more? And is it only confined to the handloom and handicraft of Odisha? Which one, sir? This meeting. Yeah. Principally, we are talking of Odisha because this Odisha Corporate Foundation is meant for economic development as one of its goal, a main goal rather, to spur and try and do connecting various people with ideas, with actions, with finance to create and encourage economic activity. So that is what we are trying to do. But I will not give my opinion about how the work moves on because sir, we all know how the work moves on. We know what has happened in last 70 years. So no point in talking about that. No point. What we should do now is the moot point. We have to look ahead and move on. Correct. I would like to say one more thing. What Mr. Vikas Bhargav said, we had order actually near about 1 lakh piece back order thila ama pagare 1 lakh piece order thila that you US. told already. You have told already. So that is the challenges actually we are facing. So that either I don't know government or the cluster or that is because Gajendra Babu, there is no capacity. See, procuring order when you know that there is no capability. I would rather put it as capability, which includes all kinds of capacity, both physical, mental, and financial, all constitute capability, which is not there. So procuring 1 lakh or 2 lakh order is immaterial because you know you cannot deliver. So first build capacity. I would like to second Mr. Tushar on that. See, when we are talking about handlooms, we have to agree on a fact that handlooms are something, like you said, Mr. Gajendra, that it is for a particular segment of customers. So for a particular segment of customers, knowing the fact कि हमारा state रो capability केतिकी अच्छी, we should aim at businesses, we should aim at POs. Setiki jetika me kori pariba. Maybe your negotiation could have been instead of 1 lakh, 10,000 pieces. So I am ready to give you 10,000 pieces. Explore it out, take it, and we get back on the next order or a phase by phase. Try get premium order so that low volume, high margin. Yes, and then see, the point is that we all want to do business.
we are helping weavers, but eventually we are the one who are doing the business. Ame amaro contributions weavers ko sato share zarur karuche, but main focus amaro hochi to bring business. So the point is that ki hame business ko phase by phase release kari pariba without declining any order, giving opportunity to scale up. Amaro loko manoko hame scaling up ro opportunity dekina convincing the consumer that yes, I'm ready to go for 1 lakh, but not in a month, maybe in 4 months time. Rajendra Babu, you please help us. Right. Yeah. So we have to help each other. So for example, I have sure. Vikas wants to say something. I want to say something, again, what we are doing is we want to sell what we can do, and that will not work in the market. No, Mr. Vikas, I totally agree to many of your points. I would just say one thing that I have an export market, and I present the ethnic work of Odisha to my export client in Europe, and she told me that I need napkins with a motif work. I think I need to mute somebody or something. So please mute everybody else. She told that I need like napkins with those motif work, and I need a bulk quantity of around 75,000 pieces. So what it is, I just told that let it be a staggered PO. Let me do 25,000, 25,000, and 25,000, because it's a handwork. It's a handwork that you are asking for. You are not asking for a like a machine kind of a thing or anything. So if you are asking for a handwork, you have to compromise on certain facts that a man can only do this much in a day. So maybe because of the relationship or the trust factor which we had already set up as a company with them, the deal has gone through and we would be slowly starting work. So the point is that kepe humko negotiate kariyako padiba to help our people, because see, we have the capability of bringing 1 lakh orders, 2 lakh orders, 4 lakh orders. We are educated and matured enough to do that. But what we have to see that who are the people we are dealing with? They are karigars. They are not machines. They are human beings. They can work productively for 8 to 10 hours a day or max. We cannot ask them to sit all over the night to furnish my order, I would say, because I would be earning 60% and I would be probably giving them 20% or 30%, right? So it's my order. So we have to think like that. It's more like a lathi, saap bhi mar gaya, or it has to be both ways. Actually, I agree with you, Sangeeta ji, in a way that we should get orders, what we can deliver, and Tushar ji is also saying same thing. But the point is, what we want to emphasize, like we tried to go and meet Minister of Textile, and then unfortunately, Ministry of Textile is busy with NIFTNs. There's a big gap. We can bring volumes, we can do things, but they are busy with Niftians. See, everything the human, when we talk about numbers, we always think of mathematics. Okay, we do not think of physics when it is numbers, although numbers do form the basics of physics as well. But yeah, pitching is important. We have to pitch in and we have to get our things done in the right way. Okay, I think we may call it a day today. I worked in Indonesia, and both the countries, they support their local handloom in a big way, very, very big way, strongly, and which India cannot do, surprisingly. Vikasji, can you make a paper giving some examples? What kind of help is required? I understand you are fully aware of the handloom sector in Odisha. Yes. Can you make a small paper? You need not touch every aspect, but some aspects which needs urgent and for capacity building. Sure. That is what is lacking in Odisha. These are all small artisans working in a very bad environment, working physically and earning 300 rupees. That is no way of developing a sector.
So can you make that concept paper? Yeah, exactly. He should also, and Sure, sir. combinedly you We'll can definitely give a try on this. And give it to us. We try and push it as an idea at the right quarters, if possible. Thank you. Thank you, sir. We'll do that. As I said, we have started in a small way by applying for a cluster with the government at Balangir area for the artisans located there. I request that we please help OCF to make it a success. Maybe that will become a model for others to follow and copy. Absolutely, absolutely, sir. it will be our pleasure, sir, actually, because we are basically from undivided Balagir, actually. So definitely it will be our pleasure. If anything you are doing for our district, then definitely it will be our pleasure. It will particularly my pleasure. Yes. I know. Patna Maharaja you are talking of. No, Patna Maharaja, not Patna Maharaja, it's Pariyar Maharaja. Mr. Tushar, खाली गोटे जिनसर दुख रहला कि लाइक आमे समस्त ए वेबिनार रे रहलु बट गोटे भी वीवर रहलानी टू स्पीक एक्चुअली तंको कोनटा प्रॉब्लम फेस वे ऑन द नहीं थिले ना मेहर थिले ना थिले मिस्टर मेहर इज अगेन नहीं 4-5 जन थिले representative of all the weavers but नहीं one lady wanted to speak. I would have loved to hear them. No, Sangeeta, one lady wanted to speak, but somehow she did not get time. Sukanti, and she has left now. Sukanti, she was there. But you have to manage with time. I can see Mr. Maranjan Meher is here also in audience, I think. And already I have seen he's from both actually. And he's from such a family. family re loke एमती गोटे माने फैब्रिक रे माने कोन कि सुना तयारी करी समान तयारी करछि सेटा बोधे को महाराज पाखरे अछंती कहउतले मनोरंजन मानती एक्चुअली ऑडियंस रो अछे ताकर म्यूट करी हबो कि म्यूट रो अछि बोधे बट कोइ दिले तांकर फैमिली गोटे एमती गोटे डिजाइन कर दिले से टाइम रे महाराज को दी दिले सेटा जे माने फैब्रिक रे माने सुनारो Sir, I would tell one thing, Mr. Gajendra, कि अपन यदि कांचीवरम sarees देखिबे, I have one, I could bring it and show it to you next time. Kanchivaram sarees borders were actually made of gold, and they had a resale value. The handloom ra seiti value ta body jai when they have a resale value. Exactly. Unfortunately, amara handlooms ra say resale value ta nahi, and with so many mix-ups and unintelligently, like where Vikas can actually pitch in the textile mind. किछि अकल न था एटा सेटा मिसी की गोटे कलर मारी गला 2 wash 3 wash रे fabric is rotten. केते भी भलो डिजाइन No, that has been highlighted, Sangeeta, that fabric is one of the weaknesses of our handloom. Tushar, the point is that how do we commercialize? First of all, we lack in commercialization of our handlooms. Very few people know the techniques and they don't like to spread it to the community. We need the community spread, like Corona is happening. We need the community spread of the skills. The community spread gote hoba nihati dokar. Marketing kariya pai to आजकली e-commerce platforms are widely available. Ko bhi loko just with one GST number only can go ahead and become an entrepreneur and start selling. There is no like a rocket science involved. Correct, Sangeeta, as everybody had said. At this date, nothing. There's no rocket science involved. Gote padha likha loko bhi kar paribo, gote na padha likha. But sir, I would actually like to hear from the weaver कि तको actually the problem कौन था? Why are they not able to do it? I don't want to hear from the bureaucrats. I don't want to hear from all of us. We are only talking about their incentives, that is lack of this, but on the field, say लोगों को कौन problem हुए? Do the fabric, do the yarns reach them on time? If not, let's fix it. No, you are they ready to heard so many people? They have highlighted the issues being faced by the artisans. Sorry, I will add what Tushar sir is saying. Sangeeta ji, what is happening is 15,000 per month is the income these weavers are getting, around 98%.
in India. So you can Which is imagine good why they enough, will, sir. why Which they is will want to do. good enough. 15,000 per month. Is good enough. Our workers are getting the same thing. It's very Yeah, less. It's my very less. tailors, they start this. Yeah, the C grade tailors start at a salary of 10,000 rupees. No, that is Here because in you are Bangalore, Sangita. You are Sangita ji, taking these them are as world-class workers. You are weavers. not taking them as artists. These are Because they world-class weavers. design, they weave, they do everything. They are Yes. not simply tailors. Yes, they work day and night. And they do the color mixing. They deserve at Okay. least 60,000. They at do least. everything. So for an artist to get 15,000 is not enough, who is working 12 hours a day. No, and that is what I wanted to hear from them, that they are Okay, next time. Okay. Yeah, definitely, sir. Next time. Okay. We'll try and get something. Okay. I think good night to everybody. Thanks a lot for everybody to participate and contribute. And we seek your help and guidance to take this forward. As I said, OSIP has taken a small step forward, concrete step rather, instead of only talking. We believe in action. So let's hope that we do something. Yeah. Thank you. Good night. Thank you very much. Right.